ओके जी, मैं ज़रा डिबेट का फॉर्मेट आपको बता दूं। फॉर्मेट इस डिबेट 2 में ये होगा कि हम डिबेट करेंगे 3 प्रोपोजिशंस पे जो आपके सामने अभी डिस्प्ले में है। इन प्रोपोजिशन में जो प्रोपोजिशन 1 होगी वो होगी हमारी यूनिवर्सल हायर एजुकेशन इज अ बेसिक राइट और नॉट। प्रोपोजिशन 2 है कि मार्केट में गवर्नमेंट का क्या रोल हो, और तीसरी है सिटी से रिलेटेड। एट अ टाइम इन तीनों प्रोपोजिशंस पे हर टीम को 10-10 मिनट मिलेंगे। सो टीम ए विल हैव 10 मिनट्स, टीम बी विल हैव 10 मिनट्स टू फ्लोट देयर पॉइंट्स। उसके बाद हर टीम को 3 मिनट मिलेंगे रिबटल के, कि टीम ए को मिलेंगे कि जो टीम बी के पॉइंट्स हैं उसके रिबटल के लिए, इसी तरह टीम बी को 3 मिनट्स मिलेंगे। देन वी विल हैव 2 सेशंस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। पहले सेशन में 5 मिनट हम फ्लोर को देंगे कि वो क्वेश्चंस पूछें टीम से, फिर हम हर टीम को 5-5 मिनट देंगे कि वो रिस्पॉन्ड कर लें, एंड देन वी विल हैव अ सेकंड राउंड। सो लेट्स स्टार्ट द डिबेट। We have 3 propositions here. As we all know, the basic education is a human right. ये तो सब एग्री करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हायर एजुकेशन भी बेसिक राइट है या नहीं। ये हमारी जो फर्स्ट डिबेट है उस पे है। इस पे हमारे पास दोनों तरफ के आर्गूमेंट है और वो हमें हमारी टीम्स आपके सामने पेश करेंगी। दूसरी प्रोपोजिशन हमारी ये है कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए मार्केट में। एक डिबेट ये है कि पाकिस्तान की मार्केट्स डेवलप नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है। दूसरी डिबेट ये है कि नहीं, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मार्केट्स काम नहीं कर रही। इस पे भी अगेन हमारी टीम्स जो हैं वो डिबेट करेंगी। और तीसरी जो प्रोपोजिशन जिस पे डिबेट होगी वो है सिटीज़, कि हमारी सिटीज़ कैसी हों। अगर आपको पता हो कि हमारी सिटीज़ का अभी स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, हाई राइज नहीं है, डेंस नहीं है, जो हम पाइड में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सिटीज़ आर इंजन ऑफ ग्रोथ। तो जो रिसेंटली जो हमारा सिटी का स्ट्रक्चर है वो इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं है। इस पे भी हमारी टीम्स जो हैं वो डिबेट करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द डिबेट। आई विल रिक्वेस्ट टीम ऑन माय राइट साइड टू स्टार्ट विद। यू गाइस हैव 10 मिनट्स टू थ्रो योर पॉइंट्स। Thank you so very much. It's indeed a pleasure to be part of this very interesting debate between government and the economy. I'll start with the first proposition, which is about the universal access to higher education. First of all, let me at the very outset make it very clear that I'm in the favor of higher education, availability to every citizen of this country. This is my very out sort of set statement that I like to make. So my argument is that the network of universities got to be sort of so wide so that everyone has to have the access to higher education. So therefore, my submission is that governments and institutions at every level, in our case it is the federal and provincial level, got to ensure, and society at large got to ensure that the availability of higher education is made to every every citizen of this country. Why I'm making this argument? Because there is a vast sort of literature available, and certain evidence also which supports the literature, is that there is a very big and large premium of earning to those who basically have university degrees compared to the other group which does not have this sort of university level education. So, and besides their sort of earning premium, I also would like to argue that education is a very rather remarkable source for socio-economic mobility. So therefore, those who have access to education, they have this tremendous opportunity to have, socio-economic mobility, and they have this opportunity to make this huge sort of earning premium.
So, while making this argument in the favor of higher education, access to everyone, I am also very much cognizant of this fact that the standard of higher education is decreasing, rather very rapidly in our country. But here I am to argue that that sort of deterioration in higher education has not only got to do with the number of universities that we are opening up, but there is predominantly sort of driven by the so many other factors, the social sort of factors and the political atmosphere and particularly the poor quality of university management. So I don't see any correlation between the quality of higher education and the number of universities that we are opening up. So even if we did not have the number of universities that we have in peripheral regions for that matter, the quality would have been as deteriorating as it is now. So my argument is that university education provides certain opportunities, and we also note that the power corridor of this country is very much narrow. And there's only one way for the majority of population to be part of that very narrow power corridor, and that sort of way is through education. So higher education provides opportunities for very disadvantaged people to be part of that governance process and policy making process. So I mean, this is what I wanted to say about the university education, and now I would like Dr. Salam to say about the other proposition, which is about. Yeah, thank you. Yeah, it's like I have saved my opinion that government intervention in this area and in favor of higher education. If we talk about the importance of education, I think it will take hours to talk, but this point will not finish. But I will build my मैडम आई विल मिक्स इट नो वरीज मैं ट्राई करूंगा इसको कि मैं इसको बिल्ड करूं इन रिक्वेस्ट यू टू मूव टू प्रोपोजिशन 2 and 3 एज वेल बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ओके रेगुलेशन I thought we have to, हमें जो दोनों को इस टॉपिक पे अपने पॉइंट्स देने थे, बट I will switch on there is no market in the country because of this excessive regulation. यहाँ पे देखें मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट और गवर्नमेंट हम इनको अलहदा नहीं कर सकते. They will work simultaneously and we need both of them. अगर हम सिर्फ मार्केट पे रिलाई करें तो मार्केट जो है वो हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं. They will try to turn it into monopoly और वो प्रॉफिट के लिए जो वो कोशिश करेंगे. सो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे हम रेगुलेशंस की बात करें, रेगुलेशंस दो तरह के होते हैं ना. एक तो ये होता है कि मार्केट को सही फंक्शनिंग के लिए जो है रेगुलेशंस की जरूरत है. जब हम मार्केट की बात करते हैं, देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ द मार्केट. 4 कंडीशंस, हार्डली ये 4 कंडीशंस जो है वो कहीं पे भी जो है वो फुलफिल हो सकते हैं. जैसे फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, फ्री इंफॉर्मेशन, large number of buyers and sellers and homogeneous product. अगर ये conditions पूरे हों तो उसके बाद ही वहाँ पे efficiency आ जाती है. Otherwise अगर ये conditions fulfill नहीं हो रहे हैं तो efficiency हम नहीं कह सकते. और क्या करेंगे, जो market operators हैं, they will try to monopolize, and because monopoly जो उनके favor में है. अगर markets के full benefits लेने के लिए, I think there should be a strong government to ease these 4 conditions, यानी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट को जो है वो प्रमोट हो सके. और रेगुलेशंस ये ना हो कि आप जो एंट्री के लिए बैरियर्स कर रहे हैं. आप जो आपके रेगुलेशंस हैं, दे शुड बी
promote that more number of people should come to this market, यानी वहाँ पे जो वो सेलर्स जो वो ज़्यादा हों, जो बैरियर्स हैं, जो टेक्निकल बैरियर्स हैं, जो फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, वो दूसरे बैरियर्स हैं, इन सब को जो वो गवर्नमेंट दूर करें, तब ही जाके जो वो एक एफिशिएंट जो वो मार्केट जो वो इसमें आ सकती है. अदरवाइज always they will try to turn it into monopoly, they will try to turn it into oligopoly, and for the sake of profit. So these both the factors, market and government, they have their important roles. If they play their important role, then I think जो सोसाइटी में जो वो एफिशिएंसी आ सकती है. और इनको हम जो वो सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि ये जो है वो जैसे मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि हर इंडिविजुअल का एक काम है, अगर उस काम को छोड़ के वो कोई और काम करेगा तो वहाँ पे जो वो इनएफिशिएंसीज आएंगे. सो गवर्नमेंट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमें जो यानी second and third we have to talk cities. Now come to the cities. इसमें जो है वो मैं एक यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर करूँगा. When I was in Germany, I have heard about this story कि in Germany, you know, अल्लामा इकबाल have spent some time, वहाँ पे उनके इकबाल चेयर भी है एक आइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे इनके नाम से स्ट्रीट भी है, और जो उनका घर है वो एज ए म्यूज़ियम वहाँ पे रिस्टोर किया गया है. सो जर्मन्स ने उनसे पूछा था कि आप लोग क्या करेंगे जब आपकी सिटी के में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे. तो उन्होंने कहा था कि हम इसी तरह का एक और सिटी बनाएंगे, यानी बिकॉज ऑफ इसको जब वो पॉपुलस बनाने में या इसमें जो है वो इसी तरह का एक और सिटी. अभी जर्मन्स जो है वो यही करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे वांट टू मूव सिटी टूवर्ड सम एरिया, वहाँ पे वो सबसे पहले जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो अरेंज करते हैं, यानी वहाँ पे उनके जो है वो मार्केट है, स्कूल है, कॉलेजेस है, मेडिकल सेंटर है, एंड देन दे विल अलाउ पीपल टू कम एंड लिव एट दैट एरिया. एंड सेम अगर हम हदीस देखें तो इस तरह की एक हदीस भी हमारे हैं कि जब मदीना की आबादी बढ़ जाए तो इसी तरह का एक और शहर बनाएं. इससे हमारे बहुत सी चीज़ें यानी माइग्रेशंस और इस तरह भी. कोयटा में क्या प्रॉब्लम है, कोयटा में ये प्रॉब्लम है कि एक वन ऑफ द मेजर सिटी, आप जहाँ पे यानी आपको 10 मिनट ट्रैवल लगते हैं, यू हैव टू स्पेंड 3 hours while sitting in the car, और आप जब वो ट्रैफिक जाम की वजह से फंसे होते हैं, बिकॉज वी हैव पुअरली मैनेज दिस. हम इसको जब वो मैनेज नहीं कर सकते. ओके जी, आपका टीम का टाइम अब खत्म हो गया. मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं स्टूडेंट्स के लिए कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है प्रोपोजिशन 1 में कि हायर एजुकेशन जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, सबके पास होनी चाहिए. प्रोपोजिशन 2 में जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, आल्दो टीम ने वो तो एड्रेस नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि मार्केट और रेगुलेशन को एग्जिस्ट करनी चाहिए. हमारा सवाल ये था कि मार्केट क्या एक्सेसिव रेगुलेशन है या नहीं. तीसरा जो था सिटी से रिलेटेड, इनका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुड कम फर्स्ट एंड देन वी हैव यू नो द पॉपुलेशन एंड दोज थिंग्स, और ट्रैफिक कंजेशन के जो हैं वो इश्यूज हैं. नो लेट्स कम मूव टूवर्ड्स टीम ऑन माई लेफ्ट साइड. जी, यू हैव 10 minutes to talk about 3 propositions. जी थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह अपोजिंग साइड ने कहा कि जी हायर एजुकेशन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, तो मेरे ख्याल में एक्सेस टू एजुकेशन इज़ अ राइट, वो ठीक है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे. तो एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए, एक्सेस को हम इम्प्रूव करें, ना कि हर सिटी और हर टाउन में हम यूनिवर्सिटी बनाएं जहाँ पे एक डिवीजन लेवल पे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे उनका यूथ हॉस्टल हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऐसी हो कि आने जाने में उनको मसला ना हो, रहने सहने में कोई मसला ना हो. तो एक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट, उनको एक्सेस दी जाए, ना कि यूनिवर्सिटी को उन तक एक्सेस दी जाए. सेकंड इज़ क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी. जो हमारी पहले यूनिवर्सिटी हैं, पहले हम उनकी जो क्वालिटी है वो देख लें, ना कि हम और बनाएं, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब है. thirdly we have to move towards technical education. अभी जिस तरह CPEC आ रहा है 2028 तक शायद ऑपरेशनलाइज हो जाए. जितनी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं वो इसलिए उन्होंने शिफ्ट किया ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन के पास थी, और जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने उसको अवेल किया. हमारे यहाँ सब यही हायर एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं. तो जब ये ऑपरेशनलाइज होगा तो इंडस्ट्री किसने रन करनी है, फैक्ट्री की मशीनें किसने रन करनी है. सो हायर एजुकेशन के बजाय इंटर लेवल पे, BA लेवल पे आप टेक्निकल एजुकेशन दें, वो हो सकती है टाउन के स्कूलों में एंड हायर एजुकेशन उसमें.
تھرڈلی میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہوتی ہے سینٹر آف لرننگ ہوتا ہے. میرے فادر اسلامک کالج پشاور میں تھے تو وہ ایک سینٹر تھا, آدھے کے پی کے سے لوگ وہاں آتے تھے. سو ادر دین ایجوکیشن جو آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس سے ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ امپیکٹ آیا. مطلب زندگی سیکھنے, مطلب بہت سے سبق سیکھے اور لوگوں کو پہچانا مختلف علاقوں سے, ویلیوز, کلچر. سو یونیورسٹی ایجوکیشن کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک ڈویژنل لیول پہ ہو, بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں, میل جول ہو, ایکسپیرینسز شیئر کریں اور ایک دوسروں کو پہچانیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. سیکنڈ جو ہماری پروپوزیشن ہے کہ گورنمنٹ فٹ پرنٹ کتنا ہوتا ہے. آئی ایم اے ٹرائبل پشتون اور یہاں پہ بھی سب میرے خیال میں ٹرائبل ہیں. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ابا جی ہوتے ہیں, اس کے 6 بچے ہوتے ہیں, اور وہ ایک کو دکانوں کے حساب دیتا ہے, ایک کو زمینوں کے حساب دیتا ہے, ایک کو ٹرائبل افیئرس کا کسی سے ملنا ملانا ہو, تو شام کو جب وہ بیٹھتے ہیں اوور ٹی تو ابا جی پوچھتے ہیں ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے دکان کا, ایک سے پوچھتے ہیں ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے, اگلے سے پوچھتے ہیں جی زمینوں کا ٹھیک چل رہا ہے, ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے. سو اسٹیٹ کا گورنمنٹ کا رول اتنا ہی ہونا چاہیے. بیٹے جو ہیں وہ پرائیویٹ پلیئرز ہیں, ایجنٹس ان دا سوسائٹی ہیں, وہ اپنا دیکھیں کام ایفیشینٹلی. اسٹیٹ سے پوچھنا چاہیے کہ ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے, سب فیسیلیٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے, ریگولیشن کام پہ ہلکی پھلکی ہونی چاہیے, تو سب ٹھیک چلے تو بس اسٹیٹ کا اتنا رول ہونا چاہیے. تھرڈ جو سٹیز ہیں, ڈینس سٹیز جو ہیں وہ اپرچونیٹی لے کے آتے ہیں. جو آپ نے کہا ہے نا کہ کوئٹہ سے یہاں جانے تک 3 گھنٹے لگتے ہیں, تو اگر یہ ورٹیکل سٹیز ہوں گے, میں ایک بلڈنگ میں رہوں گا جس کی 80 منزلہ بلڈنگ ہے, میں اوپر فلیٹ میں رہتا ہوں, نیچے سٹور ہے, ادھر ہی میرا آفس ہے, اور ورٹیکل ہوگا تو یہ شرنک ہو جائے گا. 1 ایکڑ میں اگر کوئی 50 لوگ رہتے ہیں اور اسی ایکڑ میں اگر 5000 لوگ رہیں گے تو لوگوں کی موبلٹی آسان ہوگی. 15 منٹ کا جو سٹی ہوگا, جو ریڈیس آف دا سٹی ہوگا وہ کم ہوگا, اور یہاں پہ غریب کے رہنے کے لیے اپرچونیٹی زیادہ ہوں گی, بیکاز جتنے زیادہ لوگ رہیں گے اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اتنی زیادہ اکنامک ٹرانزیکشن ہوگی, ڈیمانڈ چیزوں کی اتنی زیادہ ہوگی, اسٹریٹ وینڈرس کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. سو ڈینس سٹیز ایک پورا اکنامک انجن ہوتا ہے اکانومی کا. سو وی پروپوز فار دی ڈینس سٹیز. ہماری آپس کی ڈیل ہوئی تھی لیکن آپ کا 1 منٹ رہتا ہے ابھی بھی, بٹ اٹس اوکے. تھینک یو صدام اینڈ تھینک یو ٹو ادر ٹیم. کمنگ ٹو دا فرسٹ پروپوزیشن, اس کے اوپر میں بات کرنے سے پہلے آئی تھنک سیکنڈ پروپوزیشن کی وجہ اوکے آئی کین ڈسکس یونیورسٹیز کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. اس کے اوپر کافی ڈبیٹ تھوڑی ہیٹڈ ہو جانی ہے مجھے لگتا ہے جو میں کہنے والا ہوں. پہلی گورنمنٹ فٹ پرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. گورنمنٹ فٹ پرنٹ جو ریگولیشنس کی بات کر رہے ہیں, ایک ہم نے پائڈ میں ہم نے ایک ریسرچ کی ہے, اس میں وی ہیو کیلکولیٹڈ دیٹ the footprint of the government, جس کو ہم کہتے ہیں influence of the government on the economy in Pakistan, is about 67%, and even more so کیونکہ اس کے اندر ہم نے وہ بھی اکاؤنٹ فار اگر کریں جو ڈیٹ کیپٹل کی بھی کل بات ہوئی تھی. نارملی جب when we look at the footprint of the government ہم کہتے ہیں کہ انفلوئنس یہ ہے کہ اچھا اتنی اسپینڈنگ کر رہی ہے گورنمنٹ تو اتنا ہی ہے, دیٹ از اراؤنڈ 22% کے قریب. بٹ government has so many other avenues through which they affect, and part of that is also regulations. اینڈ اس پہ یہ احمد صاحب نے خود جو ہے وقاص صاحب نے کافی اچھا کام کیا ہے سلج سیریز کے اوپر کہ اور میرے خیال سے پریزنٹ بھی ہوا ہے, ہماری ٹیم نے پائڈ نے کیا ہے. اینڈ تو the point is yes, regulations are really important and we do need to deregulate, and unless and until we go about doing it in a smart way. For example, I think if I'm right, to take like a basic construction permit, it takes around 9 or 10 procedures in Pakistan to get a basic construction permit. So یہ ساری چیزوں کی ایک opportunity cost ہوتی ہے on the economy, and we have calculated that. So that's why it's important for the government to reduce its footprint. That is not to say کہ government ہر چیز سے نکل جائے, because وہ بڑی ایج اولڈ ڈبیٹ ہے. کسی نے بھی اگر ایکون 101 کی کلاس لی ہے, there are categories of goods, public goods ہوتی ہیں, private goods ہوتی ہیں. I would even say کہ it's a false dichotomy, I think, false binary ہے. This is a spectrum basically, but some goods are more private in nature and some are more public in nature. تو جو public goods ہیں اس میں there is like resource allocation جو ہے market جو ہے efficiently نہیں کرتی, government کا رول بڑا important ہے. But other things that are more private in nature should be probably left to the market to figure itself out in the private sector. یہ بات ہو گئی. Coming to the cities thing, I think صدام نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری cities کے اندر جو ہے نا, I think اس میں proposition 3 میں cities should be dense and smart. Dense تو also what kind of density you want? You want smart density, but also when smart کی ہم بات کرتے ہیں, the way we define cities as smart cities, particularly in the West and in other
countries that are a little bit more richer than us. That means something totally different, you know. Smart cities, I don't think we're at a level to have that kind of smart cities. What we can do is like start making little things within our, changes within our laws, जिसकी वजह से we can encourage people to not go towards sprawling out, because urban sprawl is a big issue we are facing, and also encourage mixed use of land. In Pakistan cities, अगर आप किसी की LD के laws खोलें, हम basic from Lahore, CDA देख लें आप, zoning laws इस किस्म के हैं कि traditionally now little changes have started to be are coming in. लेकिन what happens is that you can't have mixed use. Mixed use से क्या मतलब है कि commercial use और residential use जो है same plot of land के ऊपर किया जा सके. तो इसके अंदर तो फिर obviously that will mean कि vertical growth होनी चाहिए. Height restrictions के अंदर भी it's very important to see कि why do we have both floor area ratios and height restrictions at the same time? It doesn't make sense, you know. If you have floor area restrictions or ratios अपने डिफाइन किए हुए हैं तो यू डोंट नीड हाइट रिस्ट्रिक्शंस. ये लोग समझते हैं इसके अंदर के हाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे तो एक अनमेडिटेटेड ग्रोथ हो जाएगी वर्टिकल. इट्स नॉट ट्रू बिकॉज ग्रोइंग एंड बिल्डिंग वर्टिकली इज एक्सपेंसिव एंड मार्केट सिग्नल्स देती है तो फिर ही ऊपर जाता है, वरना नहीं होता ये. तो वी नीड टू रीथिंक दैट टू, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर स्प्रॉलिंग एंड नॉट टू फॉलो वो जो एक अमेरिकन मॉडल था जिसमें कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, बाहर से आप आओगे काम करने एंड सो फोर्थ. The world has moved on. एक मिनट. अच्छा, फाइनली जो है आई थिंक ऑलमोस्ट हुआ. मैं यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाना चाहता हूँ. ये बात यहाँ पे बड़ी अच्छी की सदाम ने आपने भी कि should higher education be a basic right? I feel higher education is not a basic right. Availability and accessibility is a basic right, and that's why we need to redefine what we think about it. First, philosophically, इसको हम address करेंगे, तो only then we can go forward. Because we are, अभी तो हमारे इतना लोग बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, पहले उनको बेसिक नेसेसिटी वो तो दे दें हम, then rather than going out and making universities हर जिले के अंदर एक हम एक यूनिवर्सिटी बना दें. मैं तो I will, at the risk of becoming very unpopular, I would say I personally don't believe in this fact that higher education is for everybody, because I think innately some people are like more inclined and have better tendency to excel there in it and contribute to society through higher education or not. I, for instance, am a big believer of the Platonic system. मुझे कहा गया था उर्दू में बोले, I don't know प्लेटो को उर्दू में क्या कहते हैं, अफलातून क्या, yeah, that Platonic system कि I feel that there are tiers, you know, there are some people who are better at like understanding higher category things, and higher education should be for them. Otherwise, other people, you know, who are good at technical professions, they should do technical professions, you know. I know it's very unpopular, and probably यहाँ पे people who believe in equality for all access might brutalize me in the questions and answer sessions, but this is, I actually believe in that. I believe in the Platonic system. It makes sense, you know, and yeah. Okay जी, thank you. मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, जो टीम मेरे लेफ्ट साइड पे है, इनका ये कहना है कि जो हायर एजुकेशन है, it is not a basic right. We have to focus on technical education. और proposition 2 में इनका ये कहना है कि state role should be limited and we have to deregularize our markets. और proposition 3 में इनका ये कहना है कि cities should be dense and for smart cities we are not ready yet. तो ये इनका कहना है. अच्छा, इससे पहले कि हम रिबटल के फेस पे चलें, मैं जो ऑडियंस है उनसे ये कहूँगा कि जैसे हमने कल किया था वोटिंग, आप हमारी ऐप पे जाइए. अभी वोटिंग जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है, तो काइंडली ज़रा आप अपनी ऐप ओपन करें, वहाँ पे जाइएगा तो आपके पास डिबेट्स की आइकन आएगा. डिबेट वाले में डिबेट 2 में जो है वो आप प्लीज़ वोट करें अगेंस्ट दीज 3 प्रोपोजिशंस. तो वो जो आपके वोट हैं वो हमारे लिए अहम है, ताकि हम भी देखें कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्या सोच रही है. नो, आई वुड रिक्वेस्ट टीम ऑन माई राइट साइड, यू हैव 3 minutes फॉर अ रिबटल the points this team has made. Yeah, thank you very much.
ویری گڈ پوائنٹ. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جب میں اسٹارٹ کرتا ہوں اگین یونیورسل ایکسیس ٹو آر ایجوکیشن, میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیسک رائٹ ہے, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کو کنفیوز کرنا چاہیے ود دی بیسک ایجوکیشن ایز ویل ایز دی ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہم یہاں بات کریں ہائر ایجوکیشن کی, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں مطلب آدھے بچے جو اسکول میں ہونے چاہیے تھے وہ دے آر آؤٹ آف اسکولس. سو میکنگ مور یونیورسٹیز شوڈ ناٹ کم ایٹ دا کاسٹ آف پٹنگ مور کڈز آؤٹ آف اسکول. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک یونیورسٹی بناتے ہیں کہیں پہ, اور وہ لوگ جو اس یونیورسٹی تک ایکسیس کرتے ہوتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ اس یونیورسٹی کا ان لوگوں پہ اور اس سوسائٹی پہ جہاں پہ وہ یونیورسٹی لوکیٹ کرتی وہ کیا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی تھی آن 3 یونیورسٹیز, لسبیلا, خزدار اینڈ تربت, جہاں پہ majority of students are coming from poor household background. اور گریجویشن کے بعد 50 of them got positions in different organizations. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو گریجویشن ہے فرام پاورٹی ٹو بی نان پور, وہ گریجویشن کا ایک ہی سورس تھا, دیٹ سورس واز ایکسیس ٹو آر ایجوکیشن. اور اسی پروونس میں جہاں بلوچستان کی اگر بات کریں تو 50 سال تک ایک یونیورسٹی تھی, اور اس یونیورسٹی تک ہم اسٹینڈرڈ کی بات کریں, مطلب کلچر کی بات کریں, 4000 اور باتیں کر لیں, لیکن اس یونیورسٹی تک جو ایکسیس تھا وہ ہارڈلی ایک فریکشن آف سوسائٹی کا تھا. تو اسی لیے بلوچستان فار 50 years could not make any middle class because of not making that opportunity to its people. So, Dr. Sir? تھینک یو. اور ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو امپیکٹ ہے ایجوکیشن کا, جیسے فار ایگزامپل اف یو ہیو سیکنڈری اسکول تو وہاں پہ پرائمری اسکول کی بھی انرولمنٹ بڑھتی ہے, اور اگر آپ کے پاس کالج ہے تو سیکنڈری اسکول بھی انرولمنٹ بڑھتی ہے, یونیورسٹی ہے تو کالجز کی انرولمنٹ بھی بڑھتی ہے. اور فردر جو ہے وہ فیمیل ایجوکیشن, جو ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پنجگور میں دیکھیں, آپ لولائی میں دیکھیں, زوب میں دیکھیں, تو وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن کی تعداد بڑھ رہی ہے, یعنی فیمیل پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے. دے آر دا ڈپرائیوڈ, وہ اس حوالے سے بھی ڈپرائیوڈ ہے, دے کین ناٹ گو ٹو ادر سٹیز فار ایجوکیشن. یہ ان کے لیے بہت سے ہرڈلز ہوتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک سابوٹ جو اس کی 9th جو یہ AGM تھا, وہاں پہ ان کی ایک پریزنٹیشن تھی جس میں سر 1 سیکنڈ کہ اگر پاکستان میں فیمیل ایجوکیشن کی لٹریسی ریٹ زیادہ ہوتی تو ہمارا پر کیپٹا انکم 15% جو ہے وہ لارجر ہوتا. Okay, you have 3 minutes for rebuttal. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہائر ایجوکیشن جو ہے آپ یونیورسٹی بنا لیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور پھر ہوتا ہے کیا فیزیبل ہے. تو ابھی جو ہمارے حالات ہیں, اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں نو مور یونیورسٹیز. یہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک مکان پشاور میں بنا لوں, ایک مکان اسلام آباد میں بنا لوں, اور نہ اس میں صوفہ ہو, نہ فرنیچر ہو, نہ ہیٹنگ سسٹم ہو, تو میں نہ پشاور میں رہ سکتا ہوں, نہ اسلام آباد والے مکان میں رہ سکتا ہوں. اس سے اچھا اگر میرے پاس ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہو, اس کے اندر ہیٹنگ سسٹم بھی ہو, صوفہ بھی لگا ہو, بیڈ بھی لگا ہو, سب چیزیں ہوں, تو پھر اس کا زیادہ مزہ آتا ہے, میں اس میں رہ سکتا ہوں. سو ہم نے ابھی یونیورسٹی بنائی جا رہے ہیں. میں ابھی اکراس دی کنٹری گھما ہوں, سندھ بھی گھما ہوں. یونیورسٹیز اتنی بلڈنگیں بڑی, بچوں کو اردو تک لکھنی نہیں آتی. آئی بلانگ ٹو ہنگو, سو مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کو یونیورسٹی لیول تک اردو لکھنی نہیں آتی ہے. سو ہم کیا کریں گے ایسی یونیورسٹیز کا؟ سو آپ اتنی نہ بنائیں جتنی ہے, پہلے ان کو تو ٹھیک کریں. اس کے بعد میرے خیال میں یہ ڈبیٹ ہے کہ یونیورسل ایکسیس اور ضلعوں میں بنائیں کہ نہ بنائیں. سو فرسٹ فوکس آن دی کوالٹی آف یونیورسٹیز. Thank you, Saddam. Yeah, I agree with Saddam. Obviously, ہمارا point of view یہی ہے کہ there should be less universities. لیکن maybe on the from the flip side, if we create more universities, we're creating more employment opportunities for assistant professors, right? So, is that the aim, to have more professors, more lecturers, and so forth, or is the aim to have good graduates who can go into the industry and contribute to the economy in Pakistan? So I think that is really important. اور دوسرا یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی کہ it should not come at making new universities or making higher centers of
higher education should not come at the cost of basic education and primary and secondary. But my question is, inevitably that is what is going to end up happening, because there is so much, well, I know, we know the political economy of this country, we know the realities of this country. This is ultimately what has happened, and this will happen if we pursue this policy of focusing on higher education and not prioritize basic education, which I think we brought consensus hum ka aapas mein hai ki that is a basic right and so forth. So I think that is really important. बाकी I think दूसरे दोनों propositions तो वो ignore ही होती जा रही हैं, उसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, कुछ rebuttal क्या देना है? This is true, but I think education is a very topic hota hai that stirs emotions kahin pe bhi jaye. I think that is probably true because of that. But I think that is all from our side right now. Maybe I think we have to open up the floor now. But you are in charge, so. Okay, thank you so much. Okay, just a reminder, जो post debate voting है, kindly वो जरा app पे ज़रूर करें. नो मैं ज़रा क्वेश्चंस लेना चाहूँगा आप लोगों से, स्पेशली स्टूडेंट से, इन्हीं 3 प्रोपोजिशंस पे. फॉर्मेट ये है कि हम पहले 5 मिनट में कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम टीम्स को 5-5 मिनट देंगे, और इस तरह हम क्वेश्चंस के 2 राउंड्स करेंगे. सो जी बताइए क्वेश्चंस स्टूडेंट्स. हेलो सर, मेरा नाम अताउल्ला है, मैं IMS यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से हूँ. सर मेरा ये सवाल है कि हम अभी एजुकेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की. सर हम जब ज़्यादातर देखते हैं तो जितने भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादातर स्ट्रिक्टली वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते. और जिस तरह अगर बाकी हम लोग यूनिवर्सिटीज़ देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो उनमें काफ़ी अच्छी मतलब उसकी पॉलिसीज़ जो है वो स्ट्रिक्टली उनके रूल और जो रेगुलेशन है वो फॉलो होते हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि सर, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी मतलब उनके जो इनके स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिक्स इंटरवेंशन की वजह से वो अपने जो हायर एजुकेशन है उसको सही तरह से मतलब आखिर सरंजाम नहीं दे सकते हैं. तो सर मैं ये पूछता हूँ कि सर क्यों हम इस तरह जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है, जिस तरह सर ने बात की, बहुत अच्छी बात की है कि यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही क्वेश्चन क्या है उस पे आए, डिबेट नहीं चाहिए हमें. आप क्वेश्चन सर क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसी यूनिवर्सिटीज़ जितने बने हुए हैं, क्या उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में वही जो एजुकेशन के रूल एंड रेगुलेशन है क्या वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं? उसी पे जितने भी बने हैं उसी को हम सही तरह से मतलब उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करें. पॉइंट इज वेरी वेल टेकन. जी 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 सर मेरा नाम ब्रीफ, बड़ा छोटा सवाल पे आए हैं सीधा. Yes, sir. जी जी नाम बताइए. सर समीउल हक फ्रॉम ब्यूटम सब कैंपस मुस्लिम बाग. सर आपके जो लेफ्ट पे जो पैनल है उसने बात की कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के क्वालिटी पे काम करना चाहिए, ना कि और जो है हर डिस्ट्रिक्ट या हर डिवीज़न पे एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए. तो मैं मुस्लिम बाग से ताल्लुक़ रखता हूँ सर. वो जो रूरल स्टूडेंट्स है उनको कितनी जो है वो वेट करनी होगी कि ये स्टैंडर्ड कब तक इम्प्रूव होगा, जब तक हमें एजुकेशन जो है वो पहुंचा जाएगा? थैंक यू. बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया. वो पीछे दें डॉक्टर जाहिद. अस्सलाम वालेकुम. मेरा ख्याल है कि ये सवाल बेशक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ बना लें, नई भी बना लें, सारी फैकल्टी भी हायर कर लें, आपके पास 2.5-3 करोड़ की आबादी यूनिवर्सिटी गोइंग पॉपुलेशन है, तो जब तक आप अपने लर्निंग मोड को स्विच नहीं करते एज़ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेरा नहीं ख्याल कि हम 2-4 लाख की बजाय 10 लाख को सर्व कर लेंगे, 20 लाख को सर्व कर लेंगे, 30 लाख को कर लेंगे, 40 लाख को कर लेंगे. और क्या हम सिर्फ प्रिविलेज लोगों को सर्व करना चाहते हैं? तो जब तक हम इस मॉडल में जाएंगे, इस वक्त दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, तो वो इतनी ज़्यादा इस हायर एजुकेशन में एंटर हो चुकी हैं कि प्रॉब्ली उसके बाद फिर हमारे पास वो एक रिडेंडेंसी के अलावा, एक्स्ट्रा एक फालतू चीज़ों के अलावा हमें शायद ही कोई चीज़ रह जाएगी. तो इसलिए हमें यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, कम बनाएं, ज़्यादा बनाएं, बट एट द सेम टाइम थिंक स्लाइटली डिफरेंट एज वेल. थैंक यू. ये आगे ले आए ज़रा. मरियम पूछना चाह रही हैं. जी
Thank you. Thank you. I have a question. It's more of a three-part question. And the first one is that I really want to ask the PIDE team why we're here, you know, in Balochistan. Does it come from a place where we're agreeing that students here do not have the kind of mobility that it takes to access the kind of opportunities that we have in Islamabad? If we do, then how do you reflect on that? Number two is I find it slightly self-serving to say, to have a university degree and then say it's, you know, for a select few. I don't care whether universities are made for us to create jobs for assistant professors or research fellows, as long as people are getting the kind of access to the kind of education that they deserve. And also, in a country like Pakistan, where women do not have, you know, have a lot of issues in terms of mobility, when we say that even if let's say the Plutonian argument was were to be correct, how do you ensure that those select few will reach the universities that, for example, you set up in Islamabad, if they're women and they're sitting in Quetta or Job for that matter? So how do you ensure that? Thank you. जी पीछे से स्टूडेंट्स ये ब्राउन इधर ब्राउन जैकेट यस प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रमन कुमार है मैं आईएमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ करता हूँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने कहा कि जैसे कि हमें यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करनी चाहिए बट हम लोग के पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या हम लोग हायर एजुकेशन सब की बेसिक राइट है बट इशू ये है कि हम लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ हम लर्निंग तक ही उसको बेस रखते हैं हम उसकी प्रोडक्टिविटी पे नहीं आते हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते तो हमारे लिए पहले बेटर ये हम इन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोडक्टिविटी ले आए या न्यू यूनिवर्सिटीज़ बनाए मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं ठीक जी जी अस्सलाम वालेकुम आई एम सिराज फ्रॉम IMS UOB सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप लोग दोनों साइड्स एजुकेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और जो हायर एजुकेशन है और जो सिंपल एजुकेशन है उसमें क्या फ़र्क है और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर सिटीज़ जो हैं वो डेंस और स्मार्ट होंगे तो क्या आपको पोटेंशियल नज़र आता है कि क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको हैंडल कर पाएगी या नहीं got it. जी फर्स्ट राउंड का टाइम खत्म हो गया नो ईच टीम विल हैव 5 मिनट्स तो अगर इनका ये आंसर देना चाहें आई विल स्टार्ट ऑन माय लेफ्ट अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों ने सवाल पूछा कि कैन वी ट्रांसफॉर्म दिस यूनिवर्सिटीज़ कि जिस तरह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे वैसा सिस्टम हो सकता है कि नहीं तो हम यही कह रहे हैं कि जी हमें यही करना है इनकी क्वालिटी बेहतर बनानी है उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है जो इकोनॉमिक्स में हमें बताया जाता है अगर कोई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं क्वेटा में अगर 6 प्रोफेसर्स हैं और 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो 6 को एक प्रोफेसर मिलेगा 2 को नहीं मिलेगा इससे अच्छा अगर एक यूनिवर्सिटी और 6 के 6 प्रोफेसर उसी में हों तो आप उस इमेजिन करें उस यूनिवर्सिटी के जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग कितनी अच्छी होगी मोबिलिटी का जहाँ तक सवाल है तो हाँ मोबिलिटी इशूज़ हैं इसीलिए हम इस सिटी में आए हैं बट यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ है बट जो क्वालिटी मेंटेन करना अगेन कि यहाँ की क्वालिटी मेंटेन करना इस्लामाबाद की क्वालिटी मेंटेन करना तो जितनी कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी उतनी जो क्वालिटी अच्छी तरह मेंटेन होगी एज अ वुमेन जो मिस मरियम ने कहा कि जी यूनिवर्सिटीज़ में इशू हैं मोबिलिटी के उनकी एक्सेस के तो मैं समझता हूँ हमें इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना होगा क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें मेरी अपनी जो बच्ची है बेटी मैं उसको नहीं भेजूंगा पेशावर के किसी में या हैदराबाद की किसी यूनिवर्सिटी में बट मैं उसको अमेरिका भेजने के लिए आई विल बी रेडी बिकॉज वो वहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है हालांकि इश्यूज़ वहाँ भी हैं बट देयर इज़ अ सिस्टम वो एड्रेस हो जाता है आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं आप शिकायत लगे जाते हैं सो हमें ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये देनी है अपनी जो फीमेल हमारे स्टूडेंट्स हैं तो दैन द मोबिलिटी विल बी ईजियर थैंक यू जी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए कुछ तो कमेंट्स थे बट देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस देयर टू जितने मैं नोट डाउन कर सकता था मैंने किए हैं एंड आई थिंक आई हैव अबाउट 3 मिनट्स फर्स्ट थिंग आई समबडी आस्क्ड कि व्हाई आर वी इन बलोचिस्तान I think we are in Balochistan. I am in Balochistan because I'm doing my job. You know,
I have to be here, but I think Journey PIDE is in Balochistan because we want to reach out to the rest of the country, you know. Islamabad centric nahi hona chahiye. But that is not to say, I think that would be a false logical step to take ke पूरे बलोचिस्तान के अगर हम आए हैं, we're reaching out, but that means कि we need to reach out to every district. That is just not true. It's very important to reach out to throughout the entire country, but you don't have to physically go in every district. Just make access to education within city centers, between provincial centers, easier. And Rafi, I would like to reflect you on one very pertinent question जो वो बच्चे ने पूछा है कि एक जो बंदा जो दही इलाके में रूरल एरिया में रह रहा है उसके पास कब अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी जो आप प्रोपोजिशन आप I think उन्होंने opportunities at least I'm sorry to say उन्होंने opportunity खुद भी बनानी है. I think you can't expect like opportunity to come and knock at your doorstep, right? For instance, you have to move. And I think उसमें जो issues हैं, I agree with that those need to be figured out and those need to be reduced. But you also have to take an initiative. आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, advanced rich countries में भी you don't get universities in every rural area. That's the fact of the matter. I'm going to call a spade a spade. This is it, like risking being unpopular here, but that's true. So this is my own that. Secondly, assistant professors की बात की, it was just like a satirical comment के assistant professors की और lecturers की जो है employment generation होगी. But that is true actually. I think that is part of the reason, and that's very telling satire in itself. और दूसरी सिर्फ ये नहीं है, दूसरा एक और है, अगर आप brick and mortar buildings खड़ी कर रहे हैं तो ठेकेदारों को भी पैसे बनते हैं. That is also true. We can't deny that this is happening, and that's why we want more campuses in every district and so forth, because there are middlemen who make money out of that. Market signal, एक बार डॉक्टर नदीम ने बात की थी, and मुझे वो याद आई. मार्केट्स आपको सिग्नल्स देती है. सिग्नल्स ये है कि आप एमफिल के जो है ना कोई ग्रेजुएट्स हैं, उनकी सैलरी जो है मार्केट जो है इज लेस देन somebody who wants to work as a driver or as a cook basically. That means markets gives you signals, and those signals are really, really important, and we need to capture those signals, and we don't need more university graduates. That's the fact of the matter. I will become very unpopular after this debate, I think, and I will probably run away, but that is true. I think how much time do I have left? I think almost just gone, you know. I wanted to give a brief description of the Platonic system, which I believe in, but I think thankfully time is up, because I will at least probably become more unpopular among people. So okay, thank you. No team on my right side, please. You Dr. have Sahab, I'll just take 1 minute to comment on that. And that this quality की बात हम बार-बार करते होते हैं. ये यूनिवर्सिटी 8 से 15 साल पहले बनी है. इस तरह की और यूनिवर्सिटी 8 से 12 साल बनी है जो लसबेला यूनिवर्सिटी है. ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ टेक्सटाइल मिल में हैं. हमने 2 कमरे से शुरू किया था लसबेला में. आज वहाँ पे 60 फुल प्रोफेसर्स हैं. इस यूनिवर्सिटी ने टाउन में एक छोटी सी बिल्डिंग है, वहाँ से शुरू की थी, और आज यहाँ पे कम से कम मुझे 12,000 स्टूडेंट्स हैं और 300 समथिंग फुल प्रोफेसर्स हैं इस यूनिवर्सिटी में. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आके खड़ी नहीं हुई और बाद में लोग नहीं आए, ये इवॉल्व हुआ. तो स्टैंडर्ड वुड कम विद द पैसेज ऑफ टाइम वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग अ यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर्स बाहर से ट्रेंड होके आपके पास नहीं आते. डेफिनेटली यू नीड प्रोफेसर, लेकिन जब आपके पास एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो तो जहाँ आप ये इकोसिस्टम दें, लोग वहाँ ट्रेंड हो जाते हैं. तो ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल 8 से 10-15 साल पहले ना बनती होती तो आज पूरे सूबे में शायद आपको 2 प्रोफेसर्स ही ना मिलते. तो इसीलिए वी डोंट नीड टू सॉर्ट ऑफ मिक्स दिस क्वालिटी विद क्वांटिटी अप, कि आप पहले शुरू करें ये काम, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वालिटी वुड कम अप. और दूसरा एक्सेसिबिलिटी की बात है कि हमने मतलब कितने साल गुजारे हैं और ये एक्सेसिबिलिटी को हम नहीं दे सके लोगों तक. तो ये एक फैक्ट है हमारी सोसाइटी में कि आप वुमेन को, आप दोज पीपल हु कैन नॉट ट्रेवल, दोज हु कैन नॉट कम आउट देयर होम, तो यू नीड टू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू देम. थैंक यू. मैं कोशिश करूंगा 2-3 क्वेश्चंस जो आए थे उनको रिस्पॉन्स कर सकूं. फर्स्ट जो बात थी कि क्वालिटी क्वांटिटी, यानी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद ज़्यादा हो, इसका ये मकसद नहीं कि क्वालिटी उससे जो है कम होनी चाहिए. नहीं, क्वालिटी को आप मेंटेन रखें, उसके दूसरे क्राइटेरियाज हैं. क्वालिटी तो किसी हालत में कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमें क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है. क्योंकि दुनिया, आप देखें इस वक्त हम ह्यूमन एक्सपोर्ट की बात करते हैं,
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती हो तो इस वक्त हम जो है वो दुनिया को कितना जो है वो मैन पावर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते थे। आपको याद होगा पिछले अदवार में आप देखें कि इस वक्त अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को चेक करें तो हमारा जो कंपोनेंट है डॉलर अर्निंग का, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाके काम करते हैं और वो फिर जो है वो डॉलर्स पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं। ये यानी ये सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट है। और इस वक्त जो हमारी आबादी जितनी ज़्यादा है, इसको हम अगर सही मानों में ट्रेंड करें और दुनिया में भेजें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सरमाया हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात, डॉक्टर लोधी, लास्ट मिनट में आपसे चाहूँगा कि आप रिफ्लेक्ट करें जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था एजुकेशन की डेफिनेशन कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में। मतलब आपने यूनिवर्सिटी तो बना दी है, लेकिन क्या सोसाइटी के इश्यूज हल हो रहे हैं? देखें सोसाइटी के इश्यूज आप देखें, इसको अगर आप डिफाइन करें कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट, मतलब जो मॉडर्न और डेवलप्ड सिटीज़ हैं उसके लिए जो वो हायर एजुकेशन जो है वो ज़रूरत होती है। एजुकेशन के स्टेजेस है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, इसी तरह हायर एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन ये फाउंडेशन है, जैसे किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद होती है। तो हायर एजुकेशन है ये आपके मुल्क में जो आपके हम कह सकते हैं कि विदाउट यूनिवर्सिटीज़ हम मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आप देखें, बलूचिस्तान अगर हम कहते हैं कि पीछे हैं, एक बहुत अरसे तक एक ही यूनिवर्सिटी थी हमारी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं वहाँ पे जो है वो आप देखें कि वहाँ पे चेंज आ रही है, वहाँ पे तरक्की आ रही है, और इस तरह ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। प्रॉब्लम्स या कोई ऐसे नहीं कि ओवरनाइट कोई चीज़ जो है वो मसला हल होगा। इसमें डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ में जो है हवाले से रिसर्च होगी, आपके जो सराउंडिंग के प्रॉब्लम्स होंगे इनको कैटल किया जाएगा, इन पे रिसर्च होगी। वही स्टूडेंट्स जो है वो क्या यूनिवर्सिटीज़ में क्या होती है, आप जैसे बीएस लेवल पे या इससे पहले जो आप एफएससी के लेवल आप थ्योरीज को पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, हाउ यू कैन यूज दीज थ्योरीज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। हम तो बहुत हम कहते हैं कि आज यूनिवर्सिटी बन गई और आज ही हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टार्ट हो। आप देखें यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ देखें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल उनको हो गए। उसके बाद उस इलाके में जो है वो यानी ग्रेजुअल जो है वो चेंज आई, ग्रेजुअली जो है तरक्की हुई है। यही चीज़ जो है वो हमारी भी होगी। हम इसको जितना डिले करेंगे, जो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न एंड डेवलप्ड सोसाइटी है वो इतना ही डिले होगा। आई एग्री विद एक जो मुस्लिम बाग के स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन रेज किया, कब तक, यानी अगर हम हायर एजुकेशन नहीं देंगे तो हम डेवलपमेंट को कितना जो है वो डिले करेंगे। ओके, गॉट इट, टाइम्स अप। लेट्स मूव टू द सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस। ये आगे ज़रा लेके आइएगा, डॉक्टर नदीम को दीजिएगा ज़रा माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि बड़ी सिंपल बात है कि हमने अपने निज़ाम से आई थिंक व्हाट वी डन इज़ बेसिकली क्रिएटेड द इंसेंटिव आउट ऑफ लर्निंग। बच्चों के पास यूनिवर्सिटी ले आए, बच्चों को मॉलिकॉडल करें, उनको फिरने की ज़रूरत ना हो। मैं 12,000 मील दूर पढ़ने गया था, टिकट भी जेब में नहीं था उस वक्त। यू कुडंट इवन कॉल होम, पैसे भी कोई नहीं थे, और धक्के खा खा के सीखा, मेहनतें की, सब कुछ। आई थिंक जिस बच्चे को ये एक्सपीरियंस नहीं करता वो बिल्कुल महरूम रह जाता है और वो कुछ नहीं सीखता। तो हमें पहले तो ये देखना। नंबर 2 जो हमने किया है कि हमारे मुल्क में ना मार्केट है, बच्चे पढ़ा भी लेंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे, कुछ कर ही सकते, कोई काम ही नहीं है, ना पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। हमारे शहर जो उनसे गाड़ियों के लिए बने हुए हैं, हमारे बच्चे ना साइकिल चल सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो निज़ाम है इसमें मुझे तो ख्याल है कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठें और खाने खाएं। वुड यू एग्री विद दैट कि नहीं? माशाल्लाह डोनर आके सब कुछ कर देगा, हम चुप करके बैठे। वो पीछे चले जाएं, पीछे ज़रा। मैं पाइड से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका देना चाह रहा हूँ, पीछे जाए स्टूडेंट्स ज़रा बोलें। हेलो,
سر میرا تعلق بیوٹمز BSIR سے ہے. میرا جو کویشچن ہے وہ سیکنڈ پروپوزیشن کے حوالے سے ہے کہ اوور ریگولیشن بہت زیادہ ہے. تو اوور ریگولیشن سے زیادہ کیا ہمیں لیول پلین فیلڈ کی ضرورت ہے کہ DHA کے لیے یا فوجی سیمنٹ کے لیے تو کوئی ریگولیشن نہیں ہے, بٹ ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیسو ریگولیشن ہے. تو کیا سب سے پہلے لیول پلین فیلڈ لانے کی ضرورت ہے, اس کے بعد جو ہے ہم مارکیٹ کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جہانگیر شاہ, اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, یونیورسٹی کالج اپرو بیوٹم. میرا کوشچن دونوں ٹیم سے. بوتھ ٹیمز آر ڈسکسنگ اباؤٹ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف ایجوکیشن. دے شوڈ ٹاک اباؤٹ the budget allocation for educational purpose. And we have seen as a student, کیونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ جانتے ہیں کہ مسائل کیا ہے. پوائنٹ آ گیا بریف رہیں ذرا. بریف یہ کہ سر جو گورنمنٹ اسکول ہے وہ فیل ہو چکے ٹو پرووائڈ پراپر ایجوکیشن. دے شوڈ ٹاک اباؤٹ بجٹ ایلوکیشن, ہم کتنے اسپینڈ کریں ایجوکیشن کے پر. تھینکس. اوکے اسٹوڈینٹس پلیز اسٹوڈینٹس, آج اسٹوڈینٹس کو موقع دیتے ہیں. جی پیچھے سے ہو گئے ہیں, آگے آ جائیں, پھر آگے آ جائیں بھائی. میرا نام آصف کریم ہے, یونیورسٹی آف بلوچستان IMS ڈپارٹمنٹ سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز بڑھائیں, حالانکہ یونیورسٹی تو پہلے سے ہی ہمارے پاس, میرے خیال سے ہر تیسرے بندے کے پاس آج کل ڈگری ہے. تو یونیورسٹی بڑھانے کے مطلب تیسرے بندے کے پاس تو یونیورسٹی ڈگریز تو ہے. اعلیٰ ہم ایسا نہ کریں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, اسکلز بڑھائیں, ایجوکیشن ڈگری پرووائڈ کرنے کے بدلے اعلیٰ یونیورسٹی کی جابس کیا آئیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مطلب آپ یہ اتنا آپ ہمیں بتا دیں کہ یونیورسٹی کرنا کیا چاہتی ہے, اس کی جابس کیا ہیں یہاں پر. بالکل آپ کا سوال آ گیا, بالکل سوال آ گیا. جی مائک تھوڑا سا آگے لے آئیں, آپ ذرا آگے لے آئیں. یہ سیکنڈ رو میں ادھر دیں یار, آپ نے پوچھ لیا پہلے سیشن میں, ابھی ذرا. میرا کویشچن ٹیم بی سی ہے. اس وقت بلوچستان میں جو 3 تھرائیونگ سٹیز ہے, ایک لسبیلا, تربت اور گوادر, اس پہ سی پیک کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنے وہاں کی یونیورسٹیوں کا ہے. اور دوسرا جو انسرجنسی اس وقت ڈیفیوز ہوئی ہے وہ ساری یونیورسٹیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اس وقت اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس میں جو رورل ایریا میں ہے کوالٹی ان کو نہیں مل رہی, لیکن وہ ایک سسٹم سے گزر رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے. بالکل. تو اگر یہ یونیورسٹیاں نہ ہو تو آپ ان لوگوں کو کس طرح. گاٹ یور پوائنٹ. ادھر لے آئیے گا ذرا مائک. ایک منٹ سر, ذرا یہ ڈاکٹر سمن کو دیں ذرا. اچھا میرا کویشچن یہ ہے کہ چلے ہم بات کر سکتے ہیں ایکسپینشن کی یا نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹیز کی. تو واٹ آر دا آلٹرنیٹ ٹو دا یونیورسٹی ایجوکیشن؟ تو اسکل ایجوکیشن ہے, تو ہاؤ مینی آف یو سٹنگ ہیئر وانٹ دیئر کڈ ٹو گو انٹو ٹیبٹ؟ مجھے بتائیں. میں آئی وانٹ. اوکے جی, سیکنڈ راؤنڈ ختم ہوا. میں اب ٹیمز کے پاس دوبارہ آتا ہوں کہ یو ہیو 5 minutes ٹو ریسپونڈ. لیٹس اسٹارٹ فرام دا ٹیم آن مائی رائٹ سائڈ. جی If we come to the question of Jahangir, like budget allocation, I think یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ جو ادھر بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن میں جو انڈر انویسٹمنٹ ہے وہ آج سے نہیں ہے, وہ شروع سے ہی ہے. ایک اسٹڈی جو پہلے بھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا, رچرڈ سابو اور ڈیوڈ راس وغیرہ نے جو کیا تھا, یہ 9th جو AGM تھا وہاں پہ ایک لیکچر پریزنٹ ہوا تھا کہ پاکستان میں 60s میں جو انڈر انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن میں, اس کی وجہ سے 85 میں ان کا جو پر کیپٹا انکم جو 15% جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا تھا اگر یہ انڈر انویسٹمنٹ جو ایجوکیشن میں نہیں ہوتی. آپ جو ہے وہ یہ پیپر جو ہے وہ گوگل کر کے وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں انڈر انویسٹمنٹ ایجوکیشن میں یعنی جتنی آپ کو
اس سیکٹر میں پیسے لگانے چاہیے تھے وہ تو بہت ہی اس حوالے سے کم ہے. اسپیشلی اس وقت جو اگر ہم ہائر ایجوکیشن کو دیکھیں, اس وقت ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر پروونسز, بلوچستان میں تو بہت زیادہ سفر کر رہا ہے کہ آئی چی سی کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے صوبائی گورنمنٹ ہیں وہ رسپانسبل ہیں, اور صوبائی گورنمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ مزید جو ایجوکیشن کا آل ہے ہائر ایجوکیشن کا آپ کے صوبے میں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. سو بجٹ ایلوکیشن از ناٹ لائک, آئی تھنک یہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پراپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ایجوکیشن میں. اٹس نیسیسری, ادروائز وی ول ڈپرائیو آف دا پازیٹیو ایکسٹرنلٹیز آف دا ایجوکیشن, جو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے محروم ہے اور رہے گا جب تک ہم ایجوکیشن میں جو وہ پراپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. سو تھینک یو. ڈاکٹر منظور, آئی ووڈ لائک یو ٹو ریفلیکٹ آن دا کویسچن کہ ہر تیسرا بندہ ڈگری لے کے پھر رہا ہے لیکن جاب نہیں ہے. جی ویل ظاہر جاب نہیں ہے تو مارکیٹ نہیں ہے, اسی لیے تو کیا کہتے ہیں جاب مارکیٹ, اب آپ کا مارکیٹ ایکسپینڈ نہیں کر رہا تو جاب نوکریاں کہاں سے آئیں گی. تو وہ ایک ٹپیکل آسپیکٹ ہے کہ مطلب آپ کے یہاں امپلائبلٹی کتنی ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ امپلائبلٹی ظاہر یونیورسٹی گریجویٹس کی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اس پہ میں آئی ڈو ایڈمٹ آن دیٹ. لیکن ہم ساتھ جو اس کا ایک اسٹرانگ سوشل امپیکٹ ہے اس کو بھی نہ بھولیں کہ آپ اسی لیے لوگوں کو کیا کہتے ہیں یونیورسٹی ایکسیس نہ دیں کہ ان کی امپلائبلٹی آگے نہیں ہوتی, دیٹ از ون آف دا تھنگس. لیکن ایک گریجویٹ کا اوور آل سوسائٹی پہ یا اس کی لائف پہ جو امپیکٹ ہوگا اس کو ہم ظاہر کنسیڈر کر لیں. میں ندیم صاحب کے سوال کی طرف آؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت ہی انپاپولر بات کرنے جا رہا ہوں. وی نیڈ این افیکٹو گورنمنٹ, ایک افیکٹو اینڈ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ. تو جو اس وقت ہماری اوور آل کیا کہتے ہیں سوشو پولیٹیکل اکنامک ایشوز ہیں, اٹ از ناٹ بیکاز آف دی ایکسس پریزنس آف گورنمنٹ. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از لیک آف دی گورنمنٹ پریزنس. اینڈ وائی آئی ایم سیئنگ دس, گورنمنٹ تو ہر جگہ ہے نا, لیکن ایک گورنمنٹ کا ہونا اور افیکٹو گورنمنٹ کا ہونا, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. بٹ ہاؤ ٹو میک یور گورنمنٹ افیکٹو. گورنمنٹ از افیکٹو once it is accountable. So in order to make an effective government, you need a very vibrant society. تو آپ کی سوسائٹی اس وقت وائبرنٹ ہوگی کہ وہ ایجوکیٹ ہوگی. تو ایجوکیشن ultimately is the solution which makes this problem to some extent resolve. Okay, team on my left, please be quick to respond. اچھا, کچھ سوالوں کے جو جواب ہیں, ایک بچے نے کہا کہ بجٹ ایلوکیشن, آپ نے اسکول کی بات کی, تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ بجٹ ایلوکیٹ کس جگہ ہوتا ہے. اگر بجٹ مل بھی جائے تو کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک اسکول کی اگر آپ کر لیں بات, ان کو اگر ایکسٹرا بجٹ ملتا ہے تو وہ پلانٹس لگاتے ہیں, رنگ کر لیتے ہیں, جو پرنسپل اپنا روم ٹھیک کر لیتا ہے. سو بجائے یہ کہ وہ ایک پروفیسر کو لے کے آئیں اور وہ بجٹ اس پہ لگائیں, تو بجٹ خرچ کہاں ہو رہا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. اور جس طرح سے نے بات کی کہ بلوچستان میں ایک یونیورسٹی تھی, اب زیادہ ہیں تو شاید اسپل اوور افیکٹ ہوا, پہلے نہیں تھا. تو میرے خیال میں سوال ایک یونیورسٹی کا نہیں, سوال یہ تھا وہ یونیورسٹی کتنی اچھی تھی. پنجاب میں جو لمز ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے, کے پی میں ایم سائنسز ہے, اب وہ ایک یونیورسٹی ہے, وہ سب کے اوپر وہ اس کا انفلوئنس ہے. کے پی میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, بٹ ایک ایم سائنسز برانڈ بن گیا ہے. سو کوالٹی آف یونیورسٹیز امپورٹنٹ. اور جس طرح انہوں نے کہا ابھی جو صاحب نے کہ 3 یونیورسٹی ہیں. So I think we are short on time, but میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا موسٹلی کویشچنس کے آنسرس تو ہم نے دے دی ہیں. ایک کویشچن یہاں سے فلور سے آیا تھا کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے اگر ہم سوچیں گے, تو آئی فیل میں یہ کہتا ہوں ویری بریفلی, لیٹس گو فار یونیورسل بیسک ہائر ایجوکیشن. آئی بلیو کہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم ہونا چاہیے, لیکن لیٹس فنڈ everybody wants to go to university, they should have access to university. But once they get that access, get that opportunity, uske baad if they don't meet a certain standard, they cannot go to just another university and take a degree from anywhere else. ہر کسی کی بس کی بات سے نہیں ہوتی کہ وہ آئنسٹائن بن سکے یا آئنسٹائن کا کام پڑھ بھی سکے یا سمجھ بھی سکے. ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. یہ دس از اے پریکٹیکل ریالٹی آف ہیومن ایگزسٹنس کہ غالب کو پڑھ سکے یا غالب جیسی شاعری لکھ سکے. سو وی نیڈ ٹو
we need to have access देनी चाहिए है, उसको equitably हमने distribute करना चाहिए, but we don't need to realize that there are differences. Your points. So we have a good debate, और इसका जो debate है उसमें again last reminder, आपका vote जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है. Kindly vote on the app. आप वो उसको open करें. Well, thank you so much. I thanks all the teams. Okay. No, I would like to hand over. So we have Qaid-e-Azam lecture next. Our chief guest is here. Please be seated. We are starting the next session. While we are setting the stage, we have compiled the results of voting. I would request Dr. Duray Naya, Pro Vice Chancellor, to announce the results of the voting, please. नहीं, लेकिन आज इन्होंने प्री और पोस्ट नहीं किया ना. आप में से कितने लोग कल वाली डिबेट में थे? उसमें हमने 2 सवालों पे किया था वोट. यार अब वो उनकी प्रेजेंटेशन सेट हो रही है ना, जाने दें, वो हम अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे. जो पहले वाला सवाल था जिसमें था कि जी all of us agreed that Pakistan needs fixing, whether it should be an evolutionary process or through aggressive reforms. तो उसमें जो प्री वोट था, इवोल्यूशन वाले जो हैं उसमें जीते by 4.7%. They said कि जी एक gradual process होना चाहिए, not aggressive reforms. जो second question जिसपे हमने voting की थी वो था कि जी should government focus on welfare or growth. That debate went in favor of growth by 6.5%. अभी आज के सवाल आपको नए नए याद हैं, आज somehow पता नहीं इन्होंने प्री वाली वोटिंग नहीं की थी. ओके, टेक्निकल ग्लिच था जी. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट शुड यूनिवर्सिटीज बी एवरीवेयर और नो मोर यूनिवर्सिटीज. ऑलमोस्ट 50-50% स्प्लिट है, लेकिन देयर इज अ स्लाइट मेजॉरिटी फॉर दोज सेइंग कि जी देयर शुड बी मोर यूनिवर्सिटीज, 53.6%. Second question was about control of government. Should it expand or should it be limited? Good. I mean,
एंड सॉरी ये बड़ा बायस मैंने बोल दिया, गुड. Government control needs to be limited was 78.6%. यार देखें, अब वही वाली बात होती है, जलसे में लोग थे, वोट नहीं देख ले, वोट देना होता है. अगर आप वोट ना दे, नहीं रेगिंग नहीं है ये, अभी बिल्कुल हुआ है. आप सिर्फ जज्बे के साथ बैठे रहे, वोट ना दें तो फिर ये हो सकता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स जो हमारी उसमें आए. फिर सिटीज़ शुड बी डेंस और सिटीज़ शुड एक्सपैंड. मैंने खुद भी नहीं अभी ये देखे हुए, टू बी ऑनेस्ट. सिटीज़ शुड बी डेंस 72%. 28% said that they should expand. So 2 votes went in favor of the PIDE team and 1 in favor of the team from Balochistan. Thank you. जिनको बहरिया में रहना है. Bismillahirrahmanirrahim, and I am sure that you must have enjoyed the debate, because this is the culture from where we learn, we share, and we progress. Now we have one of the most distinguished lecture time in the AGM and conference, referred to as the Qaid-e-Azam lecture, and we are honored here that we have got a speaker who has a lot of experience, and I'm going to spell out his details. Mr. Abdul Samad Daud Saab, Vice Chairman, Daud Hercules Corporation, and his talk would be on the role of enabling environments in achieving economic prosperity. To start off the lecture, let me please ask the moderator of the session, Dr. Nadeemul Haq, Vice Chancellor PIDE to Plus, please come on stage, and followed by our worthy speakers, if you can also please come. Now let me briefly introduce to you the speaker. Mr. Abdul Samad Daud is currently the Vice Chair of the Board of Daud Hercules Corporation. He had been the Director of the company since 2002 and has a rich history of involvement in the company as a board member and as an executive capacity. Prior to the current role, he was the Vice Chair of the Board for Angro Corporation, which remains one of the Daud Hercules Corporation's largest investments to date. Mr. Samad Daud's rich and diverse experience of management and governance spans over 20 years. With a special interest in mergers and acquisition, he has led more than $4 billion worth of mergers and acquisition deals, including the Daud Group's acquisition of Hubco from National Power International Holding in 2012, and the sale of Daud Hercules Fertilizer to Fatma Fertilizer Company Limited in 2015. He has also played a leading role in the merger of Angro Foods into global dairy giant Royal Friesland Campania, which is based on the convergence of their values, goals, and abilities to address Pakistan's nutritional challenges. He has since served as the chair of the board for Friesland Campania Angro, Pakistan, and in addition to this, Mr. Samad Daud is an active director on the board of Pakistan Business Council, which is a pan-industry advocacy group that promotes easing of barriers to enable Pakistani businesses to compete in the regional and global arenas. And we are very fortunate that the Pakistan Business Council is giving us lots of informative reports nowadays from which we researchers take a lot of benefit. And in line with his areas of interest, he is also the director and trustee of the boards across various industries, including financial investments, energy, and education, and some of which are Daud Foundation, KSBL, Sian Limited, Daud Investments, Daud Lawrencepool Limited, and Rion Private Limited. And finally, in addition to the governance side,
Mr. Daud also has served as Chief Executive Officer for Daud Hercules Corporation Limited and Sian Limited, and is also an active member of the Young Presidents Organization. So we welcome him here on the 36th AGM and Conference of Pakistan Society Development Economics this year in Quetta, and we look forward from learning from his experience on the theme. Thank you very much, sir. Over to Dr. Nadeem. Thank you, Ji. Thank you very much, folks. It's an honor to have Samad Daud here today. As all of you have guessed, he's from the famous Daud family. And not only was his grandfather, right, one of the founders of Pakistan, they're also a family that has been very instrumental in setting up the industrial base in Pakistan. His father, Hussain Daud, has done some phenomenal stuff, including some of the things that are mentioned, and Samad is now the leading the charge for his family and for Pakistan. So I thought it was a wonderful idea to have, we brought to you Muhammad Tabba yesterday, who's also young leadership. So we thought we'd bring you Samad Daud as well in the Qaid-e-Azam lecture, which is our most prestigious lecture, so that we can learn from him what the vision of a young Pakistani businessman is. So he is the guy who now has to carry us forward. So our questions to him will be the same as yesterday that we raised with other people. That Samad Sahab, when will we see your company become a multinational? When will we see your company become challenge Infosys or the Indian multinationals? And when will we see our exports grow to from 30 billion to, let's say, 100 billion? And when will we see our challenges that we face every year? All my life we face these economic challenges disappear. And now we are looking for some very good news from you. So over to you. Thank you. Ji, Assalamu alaikum everyone. And Dr. Saab, thank you so much for this incredible opportunity to be with all of you today and share some of the thoughts. Well, you ask, as usual, ask very important and difficult to answer questions. But what I tried to do was to put together some thoughts from what I've learned through reading and through the experience that I've had. And what I would endeavor to do is to spend maybe half an hour just sharing some preliminary thoughts about what I've learned and what I've experienced. And then Dr. Saab comes more directly to the questions that, very important questions that you're asking, and then how are we approaching it. So if you just go forward. Oh, thank you. So we start with the overall geography of Pakistan, and I loved how our CEO Ghayas Khan framed the question. He said, if we were 200 million people on an alien spaceship coming into Earth, what would be the area that we will select to make our home and why? And for us, the answer was Pakistan. And the reason why we think that is because Pakistan, alhamdulillah, has been blessed with incredible geography, with incredible resources. So if you look at the country overall, we have millions of acres of very fertile land. We have availability of water. We have the most diverse geography, from the highest mountains all the way to the coast. We are bordering two of the largest growing markets in the world on the north and the east, and we are bordering the most energy-rich markets in the west. And we have obviously a large population. So in terms of natural resources, population resources, and geographical proximity, there are tremendous advantages of being located where we are. Now, and the unfortunate part is that this benefit of this geography has not been translated into benefit for the people. And I think that is the greatest opportunity Pakistan has. And if you look at this map, we have a current situation where instead of being able to transact and be the center of trade between the large growing markets on the north and the east and the large supplier markets in the west, we have hot borders in and around Pakistan. So India is a hot border, Afghanistan is a hot border, Iran is a hot border.
And then the one country that we have good relationships with China, we have the largest mountain ranges, the highest mountain ranges in the world that separate us. And even when we cross over to the other side, there's nothing for thousands of miles because all of China is predominantly based in the east. So I think that's one of the biggest issues that, that we've had to deal with. And the second thing is that what we have not been able to do in our models, which I'll talk about a bit more, is connect capability and having a good talented workforce with capital and the resources that they need in order to be productive and bring about prosperity. So I wanted to highlight some reasons why I think that is the case and some solutions as well. But before we do, I wanted to just take a couple of minutes to click this. Yeah. So if you look at history, I've given 4 examples over here. History of prosperity is really defined by capital and capability coming together. And that has been what we have learned over the last 500-600 years of economic history. Whenever you have people who are skillful, talented, curious, and creative, and they pair up with the right kind of resources, then the entire state and fate of countries are transformed. And that starts with the Medicis in Italy. This is when formal banking came in, and that formal banking led and partnered with the Renaissance in Italy, or the period of Enlightenment, where the scientific method was really curated and scaled. Then we move on to the Netherlands. They developed ocean-faring ships, which they were able to use for global trade and resource gathering resources, and that was financed by capital through formation of the first stock market in the world, where people could save money and invest in these ocean vehicles that would go out there and trade with the rest of the world, and in a lot of cases colonize the rest of the world. That was followed by the British. The British, through the invention of the steam engine, were able to automate a lot of the processes, and that was heavily supported by London becoming the financial center of the world, and the British pound becoming the reserve currency, and more. Then we went into America doing something similar, especially after World War II, as a lot of the talented scientists from Europe went into America, which led to the atomic and space ages that have dominated technology since then. And more recently, we have the example of China, which we can talk about later as well if you want. So what can we learn from this? Where am I clicking? So the framework which I think has helped me to think about this is on one side is an economic order, and the other side is a political order. And both of these are very well and very closely connected. The basic purpose, I think, of the economic order is to focus on human and capital productivity. The more you can do with less, simple economic principle, resources are scarce. The better you can apply those resources, the better prosperity, the more you can do with less time and with less people. And on the political side, what is important is human development. And what we mean by human development is things like education, things like healthcare, things like law and order, justice system. These are the basic building blocks for having the right kind of human development and the right kind of society. And the orders that the world has come up with in order to manage these two, on the economic side, the more prevalent order is obviously free markets, and on the political side, they tend to be, democracy tends to be more dominated, although China and Singapore have shown that you don't necessarily need democracy, but you need to have a system that gets the right people in the right places to do the right thing with accountability in order to make the system work. So those are the two orders that have historically been more prevalent. I think the challenge for Pakistan has been that Pakistan has had a very inconsistent commitment to both of these orders. So we tend to talk about free markets, but the policies that have come in, and I'll give some examples, have been very inconsistent in that way.
Nationalization obviously is one of the bigger ones that we have seen, but even right now we talk about government policies on pricing, government state-owned enterprises coming in, a lot of separation of economic viability from financial feasibility, and I'll share some examples. So the government comes into the economic sphere, and because the government is not able to manage its own domain effectively, the people in the private sector are forced to then have their own protection and have their own education systems and have their own healthcare systems and put up their own hospitals. So it seems to be a blurring of boundaries between the two, which makes the system very, very inefficient and very ineffective. And the democratic system, I don't want to go too much into this because मेरा ख्याल है काफी इसके अंदर tense political debates हो जाती हैं, but democratic system के we don't see consistency in there, whether you're talking about political parties serving out their terms, you talk about local government elections, you're talking about internal party elections. We don't see evidence of that. And hence, I think that inconsistent approach is what really leads to short-term decision-making and short-term thinking, which has a profound knock-on effect on the decisions and the incentives that people have. So I think the way for me to look at this is that we all have various identities as Pakistanis, starting off with the individual as a core, my identity as a person, and then obviously our identity as families, whether we are sons, husbands, fathers, sisters, mothers, our identity as a company, and this could be a company of friends or the organization that we work for, and then our identity as members of the same country. So I think what is important to see is what are the incentives that drive behaviors in and around all of these four quadrants, which are very, very important. Those incentives can be broken up into financial incentives and can be broken up into psychological incentives, feeling of belonging and identity and work ethic and integrity, or financial, where we have greater economic prosperity. So I think incentives are very important, which I want to really talk about over the next couple of slides. And we see incentives drive behaviors in various different systems. So biologically speaking, all living creatures are focused on the pursuit of pleasure and the avoidance of pain. And when we think about those two very simple, basic biological drivers, we see that happening in the natural world. Evolution, eat or be eaten, leads to a lot of innovation in the natural world. A lot of species that come out just by having some very simple laws of incentives. We see that in faith and religion, where religion talks about perfect accountability. Heaven is the best that you can imagine and hell is the worst that you can imagine. Again, is an issue of incentives. And we see that in communities as well. And what we see, if I take economic examples, which I want to dive into over here, are four. One is financing, competition, pricing, and productivity. And what are some of the incentives that we see in and around them, which leads to suboptimal outcomes? Agar hum financing ki baat kare, so we have banks and equity, which are heavily geared to. Agar banks ki baat kare, banks are heavily geared towards providing a lot of financing to the government, which leaves very little for the private sector. The equity financing, people who have money, they focus on real estate. Why do they focus on real estate? Because the taxation is a lot easier for real estate, and the regulatory requirements on real estate are very, very low. So people don't invest in companies. They don't invest in the productive side. They invest in the non-productive side because that is what is being incentivized. Agar hum competition ki baat kare, we have policies that restrict competition, whether it is in the power sector, where it's rent-seeking business models, whether it is in the fertilizer sector, which we are part of, where the price of gas and the price of urea is determined by the government, whether we look at food, support prices, water, price of water. So competition and pricing is very heavily regulated in the country, which means that the government chooses the winners and the losers. Not how good you are, is who you know, not what you know, that determines success. I think that is what one of the critical factors are. And then lastly, on the productivity side, policies are focused on
on the now production rather than productivity. And what I mean by that is, if you look at government finances, the amount of money the government spends on infrastructure and education versus how much it spends on the losses of the state-owned enterprises and the subsidies that are given, you will see that the vast majority of the resources are going towards subsidies and subsidies rather than developing people and developing infrastructure to be productive. And the net result of that is today we have an economy which is in a very distressed state where debt to GDP ratios are very high, tax collection is very low, and human development has been very, very curtailed. So this is what some numbers to show you the extent of the issue. जब मैं पैदा हुआ था तो स्टॉक मार्केट में कोई 2.5 लाख लोगों का UIN था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और 40 साल बाद भी आज मैं खाली 2.5 लाख ही है. So we haven't really had the deepening of the financial markets so far. अगर हम बैंक या प्राइवेट सेक्टर डेट की बात करें to GDP 17.4%. Even Bangladesh now is at 49%. Malaysia is at 110%. So the private sector is not using the banking channel in order to grow. And the last data point, अगर हम अपनी stock market को देखें, तो हम the debt market cap to debt to GDP market cap to GDP ratio को देखें, we are around 12%, whereas India is around over 100% now. So these are all examples where productive businesses are underfunded and underappreciated and are not operating in proper environments. So I want to highlight two examples of two different sectors, both in essential commodities. एक है हमारा energy sector और एक है हमारा telecommunication sector. अगर हम energy sector को देखें, यहाँ हुकूमत ने बहुत ज़्यादा market making खुद की हुई है. So the government effectively determines what should be the fuel source which should be used, what is the return the investors should get, and what the disco operations, distribution companies, all are under the government, and the end tariff is also determined by the government. उसका क्या end में impact हुआ है that the industrial sector has one of the highest tariffs in the world, in the region. So it's uncompetitive. So the whole point of going for pricing has not achieved this purpose. On the other side, we have telecommunications, and now we are all glued to our phones and helps us connect to the world. As opposed to the electricity now, the government doesn't set the prices, the market sets the prices. And you can see that compared to our neighbors, Pakistan has the lowest price points in the entire region. Obviously, there's challenges in the telecommunication sector. I'm not saying it's perfect. There are issues of quality and reach, but at least in terms of providing an essential service at the lowest rate, the market has done a really, really good job in providing that. Dr. Sab, this is something that you and I were discussing earlier about R&D and innovation. This chart shows how much money is spent on innovation, and as you can see that Pakistan has underinvested on this. And one of the easiest litmus tests अगर आप उठा के देखेंगे, आप कोई भी American company का annual account उठा के देख लें, आपको हर income statement में तकरीबन एक heading नजर आएगी research and development. आप कोई भी पाकिस्तानी कंपनी उठा के देख लें, एंग्रो उठा लें, लकी उठा लें, systems उठा लें, और मुझे दिखा दें कि कोई वो heading है कि नहीं, research and development. So we're not investing. Even the good formal sector is not investing. So I think the question again for me is why? And the answer for me is, again, about incentives, that innovation is not valued over here because the markets that we operate in don't value the productivity that innovation requires. And the earlier point I made about short-term thinking, innovation is a very long timeline. हमारे दिमाग में होता है कि 1-2 सालों के अंदर innovation होती है. Innovation takes much longer, 20-30-40 साल लगते हैं for innovation to really kick in. और अगर short-term mindset हो कि मैंने अपना सारा पैसा current account में रखना है, और मैंने लोन भी लेना है तो मैंने ओवरड्राफ्ट में लेना है, और मुझे इन्वेस्ट करना है तो 2 साल में पैसे वापस चाहिए, that is not creating the right kind of enabling environment for innovation to take place. So there was this, I want to talk about nationalization, because this is something that my family experienced front and center. And when Pakistan was formed until the 1970s, there was a lot of entrepreneurship and innovation that happened in the country. And one of the most incredible examples which this country had
was the case of Batala Engineering Company led by Mr. Latif, CM Latif, where this company in the 1960s was creating diesel engines and aircraft parts, which would be exported to countries like Germany, and the leaders of China came in to learn from this company in order to see how to sit there and industrialize China. So this was the example of the kind of entrepreneurship and the kind of leadership that we had, and this is just one example, but there were many examples of Pakistanis going out there and creating industrial enterprises for solving and providing good products and services, both locally and abroad. And while the nationalization went in and took over these industries and then effectively ran them to the ground, they also took over the educational institution that provided the capability for this. I think the combination of those two have had some very large impacts, ongoing impacts. And one of the shadows that remains is that profit has become a dirty word. I can't tell you how many times when Engro declares a result from very educated people, I say, yaar, wo call karte kehte yaar kitna paisa kamaoge? Because we have this view that agar humne paisa kamaya to kisi ki jeb se kaat ke kamaya. And I think that mindset issue we need to change. We need to celebrate profit, because profit is a means to create resources to deploy back into creating more resources. And what we've seen is that the scale of Pakistani enterprises are very small right now. Agar hum Engro ki bhi misal le lein, market cap is $500 million. $500 million is now the R&D budget of a medium-sized company in the region. R&D budget. And our market cap is $500 million, and we're saying, yeah, that's already so large. So scales have changed globally and locally as well. So this is something that is captured very well by Atif Mia. He speaks a lot, where he talks about how rent-seeking businesses are promoted, and taxation is a very important element of that. And I want to give you an example of what I've seen on the taxation side. A few years ago, I was doing private equity, and we were trying to look for businesses in the retail sector, in the food sector, but we found very small businesses in very large sectors. So, अगर मैं आपको retail का example दूँ, retail आज $60 billion की industry in Pakistan है, $60 billion. Logistics is $20 billion today in Pakistan. There's not a single $1 billion company here. Why? Because these are businesses जहाँ margins बहुत कम होते हैं, लेकिन आपकी capital velocity ज़्यादा होती है. तो अगर मेरा margin 6% है और डॉक्टर साहब मेरे साथ compete करें, उनका margin 6% है, वो sales tax भी देते हैं 17% और मैं नहीं देता हूँ, उनका margin 23% हो गया है. So he can always undercut me. And then what happens is that the ethical businesses don't grow, the informal sector remains dominant, and the informal sector does not invest in technology, it does not invest in capability, because the whole comparative advantage is tax monetization, tax arbitrage. And this is an example we've seen in India. जब मोदी ने जब demonetization की थी, बहुत ज़्यादा pushback आया था उस वक्त. लेकिन the combination of demonetization के बड़े notes हटा दें and technology and documentation led to a profound change in the entire retail and logistics and food market in India, because the competitive advantage of the informal sector evaporated, so the formal sector just expanded. And a lot of M&A activity happened, a lot of second order effects. Technology companies got better customers to invest in, universities got better places for the students to go, more investments in capability, and lastly tax revenues went up. So the society overall wins when good behaviors are rewarded. So this is something we spoke about. I think one of the things that I just want to highlight over here is mindset. And Dr. Saab, I ran some numbers. Maybe your organization can come up with a paper on this. Mindset ke upar agar hum dekhen, so I think there are few things that we need to focus on. So I was trying to calculate how many hours of productive time do we have as a nation. So you look at the number of people in the workforce, labor participation rates, dependency ratios, how many days or working days that we have. And at least according to my calculation, it came out to 1.5 hours per person per day is the only productive time that we have. And in that time, we have to account for everything. We have to teach our children, we have to care for the old and the young, we have to produce all the products and services that we need.
1.5 hours. So what do we do about that? So things like including females into the workforce, improving quality of education, improving technology. These are all very important things. And population control, right? I think that's one of the biggest things that doesn't get enough traction as it should. The last one we spoke about earlier was regional trade. I sincerely believe that peace is the biggest part of prosperity. No country has conflicted its way to the top. We have people today living in Germany and France that fought each other and today have the same common currency. America dropped nuclear bombs on Japan. Japan is the single largest investor in US treasuries. Conflict does not provide prosperity. Our fight is with poverty. Our fight is not with other people. And I think unless and until our overall strategies are incentivizing peace and prosperity, I think prosperity is going to be some time coming. So just want to touch a bit about capability. One example I want to share over here. We created this center. It's got a very difficult name, Magnificence Center in Karachi. इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम ये देख रहे थे कि even though people were educated, they were not able to be comfortable figuring stuff out themselves. हमने एंग्रो में भी देखा कि माशाल्लाह डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा थी मैनेजर्स के पास, लेकिन उनको मशीन चलाने नहीं आती. So we had our recent plant manager. He said, look, if you don't know how to operate the machine, how do you know how to make it better? So he created this entire program where the managers were forced to learn the machines they were managing. And that had profound implications. We had an issue with the labor, and the labor said, we're going to go on strike. And the manager was like, listen, if you're going to threaten us, we can manage these machines ourselves. So it builds a huge level of confidence if you're able to play and figure things out yourself. And the example over here, the reason why we did this is because this is a science center, 80,000 square feet, where we have all these science exhibits. And you see there's something really interesting happening, that people, even from very learned, high-quality schools, come in and they stand in front of this science exhibit and they say, "Iske saath kya karna hai?" You know, figure it out. Just interact with it. नहीं, इसके बताएं कि इसके साथ क्या करना है. जब तक आप उनको बताते नहीं हैं, वो interact नहीं करते. And they've got fancy degrees. But that mindset is about, या कुछ गलत ना हो जाए, या कुछ खराब ना हो जाए. I think this is something that we can, in our personal lives, perpetuate. कि यार गलतियाँ करो, go figure things out. चीजें टूटेंगी तो कुछ नहीं होता. कालीन खराब हो जाएगा तो धुल जाएगा. लेकिन there was this lovely research that children here know 10,000 times and yes 100 times by the age of 5. So they're hearing no's all the time, which is why वो एक झिझक आ जाती है कि मैं कुछ खराब ना कर दूँ. अगर आप greatest inventors को देखें, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इनकी हिस्ट्री में खुद ये लोग हैकिंग और खेलते थे, चीज़ें तोड़ते थे और रीअसेंबल करते थे. I think that is why initiative like this we're very proud of. But what we've had to do is have very high number of curators, highest number of curators in Pakistan, in any size museum is in this place, because people still are hesitant. But दूसरी तीसरी दफ़ा आके ना वो, you can see that mindset change. And this last thing, which is very close to our hearts, which is about capability, मेरे ख्याल से जाती है अगर हम लोगों को ट्रेन ना करें, अगर हम उनको सही तरह खुराक ना दें, और हम इसको प्रायोरिटाइज ना करें. God has been very kind to me. It's very unfair how lucky I have been. And I think for us, it's very painful that in a country like Pakistan, so many people do not have that opportunity. And we struggle. We do try to do our part about education, university ko fund kar dein, ya schools laga dein. Like the scale of the issue is completely different. And we struggle to do something more meaningful around this, because without this, I don't think the laws of prosperity will happen. So I know we're running short of time. What I'll do is I'll give you some examples of what we're trying to do as a business. एंग्रो के अंदर हम इंटरनल हमने क्या चेंज किया है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर we started incentivizing the how. It is not what you do, it is how you do it that also matters. And this is something that is guided by our chairman, that he's like, you have to develop the inside and your outside. That character and good manners, being a good human being is very important.
because it leads to trust, and trust is commercially defined. Countries which have high degrees of trust have greater degrees of prosperity and more trade happening. So internally हमने इसको काफ़ी ज़्यादा अपने reward system and performance management systems को change किया है कि these are the behaviors we would like to see, and then how do we monitor those behaviors and reward those behaviors. So you can be very good at your job, but if you're going out there being mean to people and using leverage and talking down to people, sorry, you will not get a leadership position in Engro. So I think that's something which is slowly beginning to have some profound changes, which we are very excited about. और अब अपने जो businesses के अंदर भी हम अपने जो हुकूमत के साथ हम push करें कि please हमारे industries को आप deregulate करें. आज fertilizer में यूरिया सब्सिडाइज बिकता है 80% लोअर देन ग्लोबल मार्केट, लेकिन फॉस्फोरस जो है और पोटाशियम जो है वो वर्ल्ड मार्केट के रेट पे बिकता है. दैट्स व्हाई द फार्मर्स गो आउट देयर, दे ओवर अप्लाई यूरिया, दे अंडर अप्लाई पोटाशियम एंड फॉस्फोरस, एंड इट लीड्स टू अ 24% डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी. 24%. एंड द ओवर नाइट्रोजाइजेशन ऑफ यूरिया गोज इनटू द वाटर सिस्टम्स. वो जाके वाटर सिस्टम कंटामिनेट होते हैं, वो पे औरतें पीती हैं व्हेन दे प्रेग्नेंट, और उनको जो बच्चा होता है उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो बच्चा निकलता है स्टंटेड निकलता है. these policies matter. सिंपल चीज आपने करनी है कि यार मार्केट को डिटरमिन करने दें क्या प्राइस हैं, और जिसको सपोर्ट करना है उसको डायरेक्ट सब्सिडी दें. सबको क्यों सब्सिडी हम देते हैं? आई थिंक दैट्स वन एग्जांपल दैट वी आर वेरी फोकस्ड ऑन. डेयरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर 5% ऑफ द जीडीपी इज डेयरी, हालांकि 92% ऑफ द मार्केट खुला दूध बिकता है. खुला दूध इज ग्रेट, बट खुदा के वास्ते एक मिनिमम पास्चराइजेशन लॉ ले आए ताकि वो सेफ हो. मुझे याद है जब मेरे बचपन में मेरी माँ मुझे हर रोज 3:30 बजे दूध पिलाती थी, क्योंकि for her it is trying to do the best for the child, but she doesn't know that the milk that she's giving her child has titanium oxide and urea and other chemicals in it, because Pakistan is a hot country, and if the khula doodh system is operating in a broken supply chain in a hot country, you will have bacterial growth. इससे दूध फट जाता है. उसको आप कैसे रोकते हैं? उसके अंदर आप केमिकल्स डालते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो. वही केमिकल्स आप इंजेस्ट कर रहे हैं, वही केमिकल वो बच्चा इंजेस्ट कर रहा है अपनी माँ के हाथों से, एंड द मदर डजंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, आपने एंग्रो फूड्स का या फिजिकल के दूध नहीं पीना, आप ना पिए, लेकिन आप कम से कम प्रोसेस मिल्क जो सेफ एंड हेल्दी एंड हाइजीनिक है वो प्लीज पिए, बिकॉज उसका एक डैमेज होता है और ये डैमेज कभी पता नहीं चलेगा. नो डॉक्टर विल टेल देम 50 years later कि यार बाय द वे जब आप दूध पीते थे ये उसकी वजह से है. So these are hidden things that we need to do something about, because these things really matter. So, last चीज मैं कहूँगा जो आपसे मैं एक चीज़ शेयर करूँगा. आज की दुनिया बहुत मेरे ख्याल से खूबसूरत भी है और टेरिफाइंग भी है, खौफनाक भी है, कि इंफॉर्मेशन हर जगह फैल चुकी है. A lot of it is true, a lot of it is not true, a lot of it is conspiracy theories and sensationalism. I made the mistake, I started spending a lot of time following people and following अंदर की खबर क्या है, अच्छा किस जर्नलिस्ट की किस चिड़िया ने क्या कहना है, और and I realized I was becoming a worse human being. I was becoming मेरी सोच खराब हो रही थी, and I was becoming a bad parent. I was irritable all the time. Everything became a conspiracy. And I was talking to a friend of mine we worked together. Now he's in Silicon Valley. He's an entrepreneur over there. And one night he said, "Samad, तुझे हो क्या गया यार? Like, what happened to you?" मैंने कहा, "यार तू देख यार पाकिस्तान की ये वो." He's like, "Who are you following in today's world?" अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देखें, who are the people whose stuff you are following? और मैंने उठा के देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ. And then he suggested, यार ये like इन लोगों को follow कर. And I started doing that, and the more I followed good thinkers in this world who offer their thinking for free, not only did I learn more about topics and change my mind, the better I was able to think. And I think that's a wonderful opportunity, and I want to do more of it, and I just thought I'll share this with you as well, because that's something which is in all our control. Who are the people that we follow, whose insights, whose thinking that we admire? I think being more deliberate on that and allowing the right things to get into one's mind is very important, which is why I think to sum up, I think conferences like this are supremely important, because it allows us to engage as human beings on issues that connect with all of us. And for me, my parting thoughts would be, the more we can
we can create a society based on understanding rules of engagement and incentives rather than policies and rules all the time. Ye karo, ye na karo. But creating systems that perpetuate and reward good behavior. I think the more society will prosper and the more we will prosper as a nation, because we owe ourselves to live an incredible life. And we have all the means at our disposal to do so. If only we can figure out better how to engage and help each other reward the right behaviors. Thank you very much. Well, thank you very much. That was a very insightful talk. I really enjoyed it. Very nicely done. ये मैं कह दूं कि ये आपने जो लास्ट मैसेज दिया ना, किड्स और सोशल मीडिया, यही पहले बात हो रही थी इन सब से. मैंने कहा जी कि देखिए, अब तो हमें यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहाँ मिल जाता है, कोर्सेज भी मिल जाते हैं, सब दुनिया के लीडिंग थिंकर्स भी यहाँ होते हैं, सब कुछ होता है. इट्स अ पावरफुल टूल इन आवर हैंड्स. और इन बच्चों को मैं यही कह रहा था कि भी आप ये जाए, इसको इन्वेस्टिगेट करें, यू कैन गेट अप एनीवेयर. बट कमिंग बैक टू योर टॉपिक, एक मुझे छोटी सी बात बताइए. हमने वो, मैंने बताया ना आपको, हमारे पास माइकल स्पेंस भी आए थे, नोबेल प्राइज़ विनर. तो उन्होंने बड़ी अच्छी टॉक दी. ही डिस्क्राइब्ड, इनफैक्ट यूट्यूब पे सुनिएगा, he described the global situation, global economy, and he pointed out a number of challenges. कि एक तो supply chain disruptions हो गई हैं, inflation आ रही है, and also the aging of the Western societies वगैरह. But the significant challenge that he pointed out, which everybody, we had David Otter yesterday, he pointed out कि जी how the new technologies are doing both things, labor augmentation as well as automation is destroying jobs. तो now in this environment, कल मैंने टब्बा साहब से भी पूछा था ये कि जी देखिए, हमारी इंडस्ट्री जो है अभी तक is very much into production. I mean, you are also into production, physical production, and very much into kind of commodity. Fertilizer हो गया ये, वो we are into commodity production. अच्छा तो नज़दीक कर लो, okay. Very much into commodity production, ठीक है? अच्छा, okay. Shadi, we missed you. Anyway, so क्या कहते हैं? So given that, and you also talked about, Tabba also talked about it, कि जी देखें, we need to deregulate the space. We need to create a more competitive environment. Now, what the question I asked him, and I'll raise this with you as well, कि जी, you guys are the champions of industry. You guys have a lot of political and policy space in the sense that you are able to talk to the government very often. You are able to convey your ideas. And we are holding a conference, the Charter of the Economy. Can we have a charter of economy where all the big businessmen agree that, hey guys, we want to deregulate? Obviously that means that somebody's toes are going to be tread upon, somebody is going to suffer, somebody, for example, maybe the sugar barons will suffer, maybe, you know, whatever. So can we have that kind of a charter of the economy where everybody agrees कि यार deregulate कर दे? So this is a question that we ask ourselves quite a bit. And my latest view is, it's difficult. And it's difficult because any sort of reforms in the economy, reforms are so easy to do, to say, very hard to do, and they require a lot of political capital. So anybody who's pushing those reforms will be spending political capital and getting a lot of blame for it until many years later when the benefits show up. Modi, when he demonetized, everybody was blaming him. Aapne tabah kar diya India ko, dekhen kya kya hua hai. Now people are saying, wow, you know, they're getting the benefit of it. So I think if people in positions of power are always insecure कि कल सुबह उनकी छुट्टी हो जाएगी, nobody's going to take any change. And I think so. The example I have is if you. So all the industries get together. So guys, this is. So I'll share a solution as well. So example I'll give is, अगर एक patient है जो heroin addict है और आपने उसका वोट लेना है, तो अगर वोट कैसे आपको उसको वोट कल सुबह चाहिए तो उसको वोट कैसे मिलेगा? उसको हेरोइन का टीका देके कि उसको रिहैब में भेज के? रिहैब में तो he's going to be miserable for the next 1 or 2 years. It's going to be a very painful journey. But टीके में खुश हो जाएगा, वो आपको वोट दे देगा. So I think that tells you about perverse incentives again. So I've been speaking to some of the people in political party कि इसको किस तरीके से करें. And their view is that any political party that puts forward the Charter of Democracy is going to be challenged by somebody else. So it needs to be a neutral third party that tries to bring about some conversation in and around that, but
I don't know how that's going to happen. I don't have a good answer for that. Next thing is then, the future is automation. Future is digital. Our businesses are not well positioned for that. And we have a deep crisis, as you know, okay, commodity production, exports are falling, we are not growing. And we also see that our firms are not growing very rapidly. I mean, I think you also told me once that Engro has not grown in the last 10, 15 years. So how do we get you, see, as economists, it is our job to make the economy grow. And we can't see how the economy can grow without you companies becoming multi-billionaires and also becoming multinationals. So what is the future? When do you think, your parents got you here, your earlier generation, when do you think Samad Daud will make this company a multinational and a, you know, $10, $20 billion company? So, Dr. Saab, job keh rahe na about change of technology. Yuval Harari said it beautifully. He said, for all of humankind, people have been fighting over share of prosperity. So, you know, in communism, it was the workers who were saying, no, we should deserve a better share of the gains that we get. Now, because of technology, you're not fighting for a share, you're fighting irrelevance. So if you're not needed at all in the economic space, then how do you sit there and fight for your rights? So hence concept of universal basic income are being discussed. But ये बहुत बड़ा issue है. ये एक बहुत बड़ा issue है. हम जो how we participating in it दो तरीकों से आप करें. एक तो one business I'm very passionate about is telecom infrastructure, because the future is on digital economy, and currently all the digital assets in Pakistan are owned by foreigners. How do we feel about that as Pakistanis, that the entire future of the economy is based on asset ownership, which is in the hands of non-Pakistanis? So I think that's something that we're quite passionate about. Secondly, the ability to educate, connect people with farm to markets, innovation is built on the shoulders of giants, as I call it, right? So you can't have apps until you have smartphone penetration. You can't have smartphone penetration until you have infrastructure for it. So investments in those are really important. But why we have struggled, Dr. Saab, is because we've had tremendous opportunities to grow internationally. We just can't send capital out. I can't put up a fertilizer factory in Africa with $5 million, which is the current limit of how much you can export, or how much capital you can take out. It takes $700, $800, $900, $1 billion to put up a factory. And the government, for good reasons, or the state bank says, I can't have a $200 million outflow. So there are a lot of Pakistani businesses. We can put up LNG terminals outside. We can put up power plants outside. We just can't export the capital. And if you can't export the capital, if you can't own it, you don't have a right to play in those, because these are capital-intensive industries. Fascinating. Achha, I have a lot of questions, but I want to give the people here, especially the kids here, a chance to ask you questions. They rarely get an opportunity to meet somebody like you. So please raise your hands, whoever wants to ask a question. जी बोलिए. अपना नाम भी ले लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, ताकि समस्या को पता चल जाए. बोलिए. Assalamu alaikum, sir. This is Naseem from UCOS Butum. Sir mentioned that to follow some good thinkers. Can he suggest some name for me of some good thinkers? Gee, I can. It depends on what you want to follow. But I think what I can do is I can share a list, and then you can put it on our website. But अगर आपने macroeconomics के बारे में सीखना है, globally क्या macro trends चाह रहे हैं, there's this incredible thinker called Lynn Alden. She writes extensively from first principle, physics से शुरू करके वो आगे जाती है. Energy के बारे में सीखना है तो there's people like Josh Young and Doomberg. अगर आपने confluence of economics and politics के बारे में देखना है तो Ray Dalio is a very good thinker. He has a lot of books, Principles and the Changing World Order. History of Humans में Yuval Harari speaks of a lot about history and what's going to happen into the future. So it depends on what your inquiries are. But
I'm happy to provide some thoughts to Dr. Saab which can be shared. My name is Muhammad Azam Khan. Thank you very much for a very informative, detailed talk. My question is that who is responsible for the provision of conducive environment to increase productivity and prosperity, and how? Excellent question. I think in some ways we all have some personal responsibility for it. But at the end of the day, a lot of the opportunities for improvement are in the political sphere. And I'm not an expert on the political sphere. There are many other members over here who have vastly more experience. But I also don't like the notion that our future should be dependent on somebody else's hand. So I keep on asking myself this question: what can I be doing better personally? Can I talk to somebody more? Can I educate somebody more? Can I share my experience more? Can I learn from someone more? What do I do? But at the end of the day, responsibility is with the political system, which we are all part of. Hello, Assalamu alaikum. Shenta Jaisani here. Sir, I would like to play the devil's advocate here. As you already mentioned that you are teaching your manager to become more proficient with the machines. So it means that those labor who already have the skill, like that was the problem with scientific management, as you already discussed, they become more antagonist towards the multinational companies or companies who have very much capital like you. So with this sort of antagonism is going to create more distrust, and people will say कि नहीं regulate नहीं करना, ये तो 22 खानदानों के पास चले जाएंगे पैसे, ये तो 32 खानदानों के पास चले जाएंगे पैसे. So how we are going to actually reduce that bridge, that gap? And that is the question I have been asking for so many people. So I hope you would be able to answer that. Thank you. और बहुत सही सवाल है. देखिए ये कंसर्न हर वक्त आता है कि हमने ही देखा है कि जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर डीरेगुलेट हो जाए तो कहते हैं हमने और पैसे बना लेने. And so labor की भी बात करता हूँ. Labor का तो ये है कि देखिए, I think that unless and until the managers know what they're managing, they won't be good managers. Now, as I mentioned earlier, we have now included the how into the behaviors, into the way we do it. So there are checks and balances, right? Every incentive system has to have checks and balances, and every strength will have a shadow. As long as we know what is the shadow and how to properly regulate it, I think that is important, right? But absolutely, from a Pakistan Business Council में बैठता हूँ, so we were talking what does the success of the Pakistan Business Council look like. लेकिन इंशाल्लाह अगर हमने तरक्की की, तो आधे लोग इस टेबल में नहीं बैठे होंगे. Somebody else will be sitting here. If Pakistan will succeed, it shouldn't be people like me who've had a far easier path in life. It should be somebody who did not have any background sitting in front of you, sharing these experiences. Then I would, sitting in the audience, feel, yeah, that's amazing. That's amazing, right? So. जी, thank you, यार. दाऊद साहब ये बताइए कि you just said कि you want to invest $200 million in Africa. But as a Pakistani, how do you see the political risk of investing that $200 million in Pakistan? So kya, as a Pakistani, we have to live here and die here, and whether we like the politics or not, we have to do whatever we have to do. तो आप लोग जो हैं जो इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो I mean what's the reason? मतलब आप गोरों से ज़्यादा आप ज़्यादा रिस्क अवर्स हैं. What will it take to make you believe in this country, and you invest regardless of what you think the government is going to do or not do? ज़रा इसके खुल के बात करें. जी खुल के बात करते हैं. I think thank you for asking me that question, Shah Saab. As I mentioned earlier in the talk, Pakistan is given us everything that we have, and we have a very special connection, and we're very grateful for the opportunities we've had in the country, and we as a group have continued to invest. अभी जो 2 साल पहले टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं. टुडे वी हैव द लार्जेस्ट टावर नेटवर्क इन द कंट्री. पॉलीमर की एक्सपेंशन की है, बट इन्वेस्टमेंट हैज स्लो डाउन. आई विल गिव यू वेरी फ्रैंक आंसर्स. एंग्रो में we put up the single largest
urea plant in the world for agriculture security in the country. Government policy थी, हमने जाके bid किया, हमने वो लगा दिया. The day it was supposed to start, government said, oh, so sorry, no gas. We had $1 billion of debt, no way to pay it back. That's a problem, right? Government कहती है LNG terminal चाहिए. Let me come in here. I mean, I would ask as an analyst, why did you trust the government? So, because they have policies, and it goes so very good. So the industry that we operate in, the government sets the policy, because those industries are where the policy for the government is to sit there and say, I need to have supply surety at a particular price. So they remove the financial feasibility and economic viability of projects. So if you look at power plants, Shah Sahab, you've spoken extensively about that. You have examples where people who put up cheaper power plants have gotten a lower return than people who put up more expensive power plants. So just to, we went through a crisis and we resolved that crisis. वो अभी तक वो gas नहीं मिली, but so the management team was able to sit there and come up with a system of getting gases from different places. And today we have the only fertilizer plant in the world that runs on 5 different sources of gas. जब अगर आप दूसरी एग्जांपल दे लें, LNG terminal लगा पूरे world के अंदर, it was celebrated as the fastest terminal put up, cheapest time, provides 15% of the gas to the country, and it's got NAB issues all around it, right? Now, if I've got NAB issues, I go to a foreign investor and say, hey, why don't we partner for this? They're like, but you've got NAB issues. How are you trustworthy? So if in the country we're going to view ourselves as people who are not trustworthy and communicate that to the world and tell the world, why don't you invest in Pakistan? It's not a consistent message, right? Same with power plants. We invested Thar 14 years ago. We started making investment. We haven't seen $1 coming in so far. And a lot of the view that people have, and for good reason, I can understand the reasons. ये देखें जी power plant वाले कितना पैसा कमाते हैं. So we have a choice. We say, okay, hey government, if you go with your policy, then the policy will change and we will be told that, oh, आप मुनाफा खोर है. And if we don't do it, then people ask us, why don't you invest? So what do we do? You invest without the policy. Okay, so how can I? Love to understand that. Okay, very quickly, I have 3 little questions. One is, I squirm every time I hear the word incentives. All I can think of, it means subsidies, give me protection, so I get worried when I hear the word incentives. So I want to understand what you mean by incentives. Okay? The second is, I heard you say something about allow us to, the market to determine the price of fertilizer, right? But obviously, the obvious question is, you also want the price of input. Yeah. Absolutely. Market-based, both sides. But so far it isn't. So on the one hand, for you are saying the price of input is given exactly by government, which is heavily subsidized, but at the same time, want price of output to be market-based. So I think we need to have both. 100%. Okay. So that part is covered. मैं कहता हूँ आप पूरे system को market-based करें. So which brings me to बात तो वो हो रही है ना कि let's deregulate everything. Absolutely. Which brings me to one point that Nadeem, and then I'll come to the final one. Then the businesses, I know you keep referring to the government, but the businesses themselves have not been advocating, let's have a more competitive environment, take away all these protections and subsidies. It's very easy to say that government nahi karti, political capital lose ho jayega, but if you guys were to do it, they won't lose any political capital when it comes to a small community of businessmen. Love to know what we could do better. So if you do a very cursory Google search, I'll just finish. You will see that a lot of our leaders have gone out and say, जब ये IPP negotiation में हमने कहा यार हमसे शुरू कर ले, bilateral तो शुरू तो करें, test it out. Take a first कदम. Fertilizer business ने कहा है, please आप दोनों side deregulate करें. And in that case, if you do better, so be it. You get more taxes. If you do worse, not your problem. But were you the only one saying that, or there is the entire community? But it goes back to what you're saying.
I can't speak for other industries. I can just speak for the industries I'm involved in. But I think more of such conversations should happen. You're absolutely right. Look, change is difficult for everybody. But I think we're at a crossroad now that the current system cannot go forward. When you have a when you have a debt of 87% of GDP, and very poor HDI on the other side, and don't know where the dollars are going to come from, we don't have time anymore. Okay, Samad, you have a lot of chance to talk to these guys, so I'll leave them out for the moment. Yeah, I just this reference on productivity. Yesterday, Azaz of Systems raised the point. He said, we found that the best way to raise productivity was to give employee ownership. Right. What is your reaction to a comment like that or a suggestion like that? Yeah, I love and on that, I'd add that professional management, because most of the industries, you have that in Engro, most of the industry has no professional management in Pakistan. Yeah, and I can't understand why. एक fear होता है, control चले जाएगा, क्या हो जाएगा, but we've benefited so much from professional management because they're better than what I could do. Whenever there's been even a hint कि समझ दाओ जाके Engro चलाया, like नहीं, ये समझ दाओ भी गलत है, Engro भी गलत है. So पाकिस्तान में 200 million लोग हैं. Chances are one of them is going to be a lot better than any of the family members who run that business. And we've seen the benefit of it. But हमने incentive की बात की है, is because the vernacular which has been used has been misused a lot. अभी हमने जो system के लिए कि employees को भी ownership मिलनी चाहिए is an incentive, but we say okay, that's okay. So I'm saying be clear about what behaviors we want to encourage. And see what are the incentives to encourage those behaviors. If the behavior is rent-seeking, don't encourage that. If a subsidy is helping you become uncompetitive, don't support that. Not at all. So you have to reward the right behavior. That's all I'm talking about. Okay, we have to move away from Lahore. We have to move away from Lahore. No. One last question. Shaji, let the floor get down. You can talk to him anytime. Sir, my name is Manzoor Ahmad. I have a very basic question. For the prosperous growth and development of the economy, there is need to have very excellent relations with the neighboring countries. In the context of Pakistan, and what are the reasons that do not allow us to have a good relations, economic relations with the neighboring countries, which can prosper our economy for a long period of time? Kindly answer these questions in the context of your learnings. Okay. So what we'll do is we'll take 3 questions, last 3 questions, so that Samad Sahab can do them together. ये जनाब आप जिधर मर्जी दे दें माइक. कोई खास तौर पे कोई लड़कियां भी पकड़ें ताकि मुझे ये ना कहें कि मैं जेंडर वो हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. My name is Mustafa from BUTM's economics department. Sir, I wanted to ask a question about, don't you think that there is a lot of discrimination when we are talking about private or public sectors regarding to hiring laborers or any manager? There is a lot of discrimination. किस किस्म की discrimination? It might be religious or they prefer their families more. Absolutely, we have a zero tolerance policy for any sort of discrimination, whether it's gender, ethnicity, religious. But you know what happens in reality? In reality, everybody discriminates in some shape or form, whether they realize it or not. I'll give you one example. A company is supposed to be a-religious. AGM शुरू होती है, हम तलावत से शुरू करते हैं. But since that's okay, because most of our Muslims is fine. But if it is a Christian shareholder, I'm not praying in Christianity. If it's a Jew sitting there who's a shareholder, I'm not saying shalom. So it can never be perfect. But are there explicit rules and guidelines, and do we call it out? Is it an effort? Absolutely, it's an effort to make sure it should be based on who you are as a person and the capability that you bring. But it's a constant battle, and anybody who says, हाँ बिल्कुल हर चीज़ ठीक है, is either deluding themselves or not telling the truth.
ہیلو السلام علیکم. مائی نیم از عدنان. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم نے جو چائنا نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے سی پیک کوریڈور, جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا نے پچھلے وقت میں سری لنکا میں بھی انویسٹمنٹ کی تھی, ان رزلٹ کے بعد میں ان کا پورٹ قبضہ کر لیا گیا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہم امریکہ کے ہاتھوں پیک کا کویسچن اگلے سیشن میں ڈال دیں, اگلی سیشن سی پیک کی ہے نا, جی سر, تو وہاں کر لیں گے. سر ایک اور کوشچن بھی ہے, پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیں سر. ریسورس سے ریلیٹڈ ہے کہ پچھلے سیشن میں آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, جبکہ سر بھٹو کے زمانے میں رشین جیولوجیکل سروے نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ بلوچستان میں ہمارے پاس جو بلوچستان اس وقت کڑا ہے تیل پہ کڑا ہے, اور وہ رپورٹ کہیں پہ گم ہو گئی ہے کاغذات کے نیچے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئٹہ کے ارد گرد گیس کے ذخائر ابھی تک موجود ہے. تو کیا آپ اس پہ سر تھوڑا سا روشنی ڈالیں؟ یہ بھی دیکھیے نا, یہ کیسے آنسر کریں گے, یہ تو حکومت سے پوچھیں کہ ہیں کہ نہیں, مجھے بھی نہیں پتا ہیں کہ نہیں. اچھا جی بتائیے, کوئی اور سوال ہے؟ لاسٹ کویسچن. ہاں ان کا سوال, ایک سیکنڈ یہ سن لیں. السلام علیکم سر. سر آئی ایم ولایت حسین پیوٹم سے. سر آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یوریا کی پروڈکشن سے جو زمین کی 24% گروتھ ڈکریز ہو رہی ہے, تو سر اس کی الٹرنیٹیوز ہے کیا, آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سر؟ So پہلے میں I'll take the second one and you'll just have to remind me of your question. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یوریا کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیلنس یوٹیلائزیشن آف فرٹیلائزر, کیونکہ ایک آپ کو نائٹروجن چاہیے ہوتا ہے, فاسفورس چاہیے ہوتا ہے, پوٹاشیم چاہیے ہوتا ہے, مائکرو نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک پہ فوکس کیا تو انبیلنس فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, اور کیونکہ انبیلنس فرٹیلائزیشن ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. میرے یہ کہنے کا مقصد تھا, اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پرائسنگ کے اندر مس ایلوکیشن کی ہوئی ہے, ہم نے انسینٹیوائز کیا ہوا ہے کہ آپ یوریا زیادہ لگائیں. اینڈ ہینس تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوریا سے کم پیداوار ہوتی ہے, امبیلنس فرٹیلائزیشن سے پیداوار کم ہوتی ہے. السلام علیکم سر, میرا نام سرور خان. ان کا ابھی تک رہ گیا, پلیز سر آپ یاد کرا دیں گے پلیز. نیبرز کی آپ بات کریں. What are the impediments having good relations with the neighboring countries? ایک کامنٹ کہہ دوں, although this is completely outside my zone. I think there have been a lot of other concern. میں سے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ ایران افغانستان گئے ہیں, اور میں ہم لوگ کہتے ہیں یار بڑا عجیب سا سوال ہے, میرے نیبرز ہیں, مجھے تو جانا چاہیے. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کبھی کینیڈا گئے ہیں تو تھوڑا عجیب سا لگے گا نا کہ کیوں گئے آپ کینیڈا. سو آئی تھنک فارن پالیسی کے بھی کافی زیادہ اس کے اوپر ہاتھ ہے ٹو ریسٹرکٹ ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی, اور ہمارے اپنے بھی پرائرٹیز رہی ہیں. اب وہ کیا ہیں کیوں ہیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہ کہہ سکتا نہ کہنا چاہوں گا. حالانکہ ایک جو لٹمس ٹیسٹ جو میں دیکھتا ہوں کہ جب ایئرپورٹ میں جاتے ہیں تو ارد گرد جو آپ کے جو ایئر لائنس ہیں وہ کس ممالکوں سے ہیں. جس دن ایران, انڈیا, افغانستان, چائنا کے زیادہ ہوں گے, ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹریڈ بہتر ہے, کیونکہ ویتنام نے آسیان کا حصہ بنتے ہوئے اپنے ٹریڈ کو بڑھایا تھا. نو کنٹری کین گرو وداؤٹ ٹریڈ فرام اٹس نیبرز. It's time to conclude, but just before I go, I just want to ask you a simple question. Looking to our next conference, because we are thinking of doing our next conference on building brands. So the question that comes to us all the time, and we were discussing it last night, all of us, why don't we have brand development in Pakistan, which kind of relates to your R&D issue? کہ ہم نے جا کے, خیر you're a big company, but we went and studied Sialkot, the small companies. There's no R&D anywhere. Look at the textile, there's no R&D anywhere. آپ نے بھی کہا کہ R&D نہیں ہو رہی. چلیں گورنمنٹ تو نہیں کرتی, why is the private sector so averse to R&D and brand development especially? تھوڑی سی انوویشن تو ہوتی ہے. I won't take the position that بالکل بھی نہیں ہے یا ہے. I think we are lower than we should be on the spectrum. Interloop, came up with a far more greener solution for their products, and as a Pakistani, I'm deeply grateful for it. جب جو شاہ صاحب نے سوال پوچھا تھا فرٹیلائزر کے اندر, جب ہماری گیس نہیں ملی تھی ہمیں, تو بہت زیادہ R&D ہوئی تھی اس وقت کہ یار بچاؤ کسی طرح, بیکاز necessity is a mother of all invention, right? So ہے بٹ کم ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا, I think they're much better speakers than me. برانڈنگ کس طریقے سے ہونی چاہیے, the far better people. I'm going to be staying on that side.
eagerly. Related to this is the issue. Why do we have so many industries? I mean, एक और हमारा model जो industry का है, we think of setting up a plant. It's the same model that we had when I was a kid. We have a plant, and then, as you said, innovation takes a long time. Elon Musk has taken 20 years trying to develop the loop, और वो अभी तक कुछ नहीं हुआ, वगैरह वगैरह. तो question is कि यहाँ हमारे यहाँ छोटी-छोटी industries बहुत है. Like I went to Sialkot, there are about 500 small firms. Nobody really emerges as a big firm. Whereas if you look at the world, industrial organization works like this. छोटे-छोटे firms आते हैं जब नई innovation, like Detroit at the turn of the 20th century had about, I think, 300 or 400 car manufacturers. They came down to 3. हमारे industrial consolidation भी नहीं होती. When you were introduced, and I agree with the introduction, your family has done a lot of mergers and acquisitions. Last year मैं ये बता जाए, mergers and acquisitions में difficulty क्या है? Why can't you do more M&A in Pakistan? सबसे बड़ा issue है mindset का. What we've seen, the proverbial डेढ़ इंच की masjid is a very true phenomenon. We tried going into IT services through acquisitions. My God, it was very difficult. A company that generates $5, $10, $15 million of sale will have a 20% margin. उसका मतलब $1 million को मिल जाएगा साल का. $1 million में उसके पास farm house मिल जाएगा लाहौर के अंदर, एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाएगी, दुबई के अंदर एक apartment मिल जाएगा. Okay, यार मैं set हूँ ज़िंदगी में. I'm good. And we're like, but we could do so much more because a $10, $15 million company can't sell to the Fortune 1000. So you need to consolidate. But they're like, if I sell my company, what am I going to do? I've got a successful enterprise. So it's an issue of identity as well. You're telling me Pakistan is different from the rest of the world? No, I don't. It's a good question. I don't have a good answer for it. I can just share an observation. I haven't really come up with a good insight around it, so I don't want to misspeak. But it's an observation which I've seen where. But there have been successes. Tariq Khan, OBS, has done a remarkable job in consolidating and buying out some companies. So there have been examples. Okay, the conversation will go on. I think we have to go to lunch. So lunch pe, I hope you're joining us. Lots of these people can ask you these questions over lunch. एक चीज रह गया? Give your mic. हाँ. हाँ, इनको माइक दे जी. Magnificence is very good, important. Please बच्चों को बताएं. Please बच्चों को बताएं. नहीं बच्चों को नहीं, बड़ों को भी. हाँ. Everyone should go there. यार, it's just an amazing place. मैं गए हुए हैं. Magnificence, इन्होंने तस्वीर भी उसकी दिखाई थी. करें कौन जा चुका है? कराची में है. प्लीज जब भी कराची जाएं, 2 दरिया जरूर जाएं, लेकिन मैग्निफिसेंस भी जरूर जाएं. इंसेंटिवाइज आप खुद हो जाएंगे जब आप वहां जाएंगे. मैं आपसे एक्चुअली कह रही हूँ, आप पूरा दिन वहां गुजारें, आपको पता नहीं चलेगा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इट. बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है. अगर कोई सब सुन ले. बेल नहीं बजी अभी. समद, थैंक यू वेरी मच. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर. मेरा नाम खुरम शहजाद है, मैं कराची से हूँ. एक मेरा 2 सवाल है बेसिकली. एक तो ये कि हम प्राइमरीली वी आर अ कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी, यू नो, और दुनिया अब सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जा रही है, वैल्यू एडिशन की तरफ ज़्यादा जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जा रही है. तो एक path to value addition, या path to, you know, services, more intellectual economy, knowledge economy, आपके जहन में हम उस ट्रैक पे हैं? अगर नहीं हैं तो जाने के लिए हम क्या करना चाहिए हमें? नंबर 1. सेकेंडली, एक थोड़ा सा पॉपुलिस्ट किस्म का सवाल है. अगर आप, you know, you become the most powerful man in the country, आपके पास सारे डिसीजंस हों, सब कुछ हों, तो वो 4-5 चीज़ें आप क्या करेंगे जो इस इकोनॉमी का, इस कंट्री का रियल पोटेंशियल अनलॉक कर सकें? ये 2 सवाल. पहले तो मैं लंच करूँगा. Folks, quiet. क्योंकि खुरम मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ. If you don't mind, we can have that conversation. Look, very clear. I think it's a false choice कि हम इंडस्ट्रियल पार्ट पे जाएं या हम सर्विसेज पार्ट में जाएं. इंडस्ट्रियल पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और हमें प्रेमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करनी चाहिए. You know, the Apples and the Metas and the Googles, they are very cool companies. But if the world right now is learning a lesson, real assets and real products are in high demand. And as this
there's tensions rise between America and China has been the manufacturing center of the world, and their labor costs rise. Global supply chains are shifting again. There's now the concept of friend-shoring or near-shoring. So how do you take part in the global supply chain reorientation is a very important question to ask. So I'm a big fan of production. We must produce as a nation. And services are important, knowledge economy is important, but अगर हम तस्बिया नहीं बना सकते तो मेरा ख्याल है going for AI and ML is a path because capability is built in layers. So we have to solidify the stack, in my view. Thank you very much, folks. Thank you, Samad sir. Thank you, everybody. Let's move to lunch. Recording stopped.